ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪਿਆਈ ਜਾਨੀ ਐ ਓ ਹੋ ਆਏ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦਾ ਰੋਮੀਓ ਬਣਾਤਾ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦਾ ਰੋਮੀਓ ਬਣਾਤਾ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸਰਾਣੇ ਸੀ ਜੋ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨੀ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੱਕਦਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਜਾ ਚਲਾਈ ਜਾਨੀ ਐ ਜਾਦੂ ਜਾ ਚਲਾਈ ਜਾਨੀ ਐ ਕਰਦੀ ਕਢੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪਿਆਈ ਜਾਨੀ ਐ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪਿਆਈ ਜਾਨੀ ਐ ਕਰਦੀ ਕਢੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪਿਆਈ ਜਾਨੀ ਐ ਓ ਹੋ ਉੱਤੋਂ ਕੌੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਕੌੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਮੱਠੇ ਜੇ ਸਵਾਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਰਕਾਨੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਰਦਾ ਨੀ ਵਾਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਨੀ ਐ ਸੁਰਤਾਂ ਭਲਾਈ ਜਾਨੀ ਐ ਕਰਦੀ ਕਢੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪਿਆਈ ਜਾਨੀ ਐ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਵਲੋਨੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਗਰੋਨੀ ਫੇਸ ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਲਿੜਿਆ ਕਾਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਖਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਵਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਗੱਡੀ ਚ ਤਾਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੇ ਵੇਪ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ हेलो। पुष्पा बाबू क्या हाल है? हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ आपको इनवाइट आया क्या था गुड कंपनी तरफ से द कन्वेंशन का? किसकी तरफ से? सॉरी। गुड कंपनी की तरफ से। कन्वेंशन? हाँ। हाँ वो गया है। क्या आप नहीं आ रहे? ना ना मैं नहीं। ये चर्च पे जाना है ना जो उधर की साइड आउट ऑफ सिटी जो है ना? तुम्हारा नाम क्या? एरन से। नाम क्या है? मयम। अरे एरन। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा तेरा ये नंबर है क्या? यार तुम बस मैंने यही करो। किसका नंबर सेव किया है ऐसे? नहीं मैंने सेव किया एरन करके। मेरे को लोकेशन कंफर्म कराना यार, जाना किधर है? रोड 6 फीट वाला सैंडी में जो है ना चर्च वो। अच्छा अच्छा समझ गया, ठीक है। कौन जा रहा है? तू जा रहा है तुम में से? मैं ही जा रहा हूँ यार, और कोई तो है नहीं। तू अकेले? हमें पूछने आ जाएगा कि इलाज होता नहीं क्या तुम्हारा अभी? कॉल वगैरह नहीं, नहीं, देवी फ्यूरी। नहीं कल आई थी ये डेवी बेबी, आज तो आया नहीं कोई और। कल आए थे। जाओ जाओ बता के आओ ऐसे ठीक है, ठीक नंबर सेव करता है। ये पता नहीं कौन सा एरन का नंबर सेव किया है। ये रूट 68 वाला ये इधर है ना, ये सर एलएस फ्रीवे पे। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब बोले।
अरे यार मेरे को जरा मालदीनी छोड़ सकते हो आप? नहीं यार, तो काम से आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सही है। मेरे को बताओगे रूट 68 की तरफ किधर कह रहे हो तुम? सैंडी के साइड में एक टर्ज है ना, ओ सैंडी की तरफ, जो इधर है ये आगे जाके ब्रिज से। अपना एल पेपल बता। पेपाल 70। 70 हाँ। भेजता, भेजने को बोलता हूँ 70। कहना जरा, ठीक है। कहाँ क्या पिंग करने वो? हेलो। हाँ यो है ना रूट 68 वाला, सैंडी के पास जो है ना वो वाला है। तुम रुक जाओ, एक सेकंड, जीपीएस खोल दो।
रूट 68 पे देख, उधर एक है। रूट 68 पे कौन सा है मेरे को वो तो बताओ, किधर की कौन सी रोड है, आइडिया तो मुझे हल्का सा। पिंग करने के लिए बोलता हूँ। पिन करने के लिए मैं 74। दूसरा, उधर कोई है नहीं, मैं सिटी वाला चर्च देखने आया था। उधर कोई है नहीं ना, तो मुझे बोला सिटी वाला चर्च देख ले एक बार। तो ये तो तुम्हारे साइड से कौन गया है, उन्हें फ़ोन करने बोलो। मेरे साइड से यार आइडल यार और फ़ोन करके उनसे कह दो पिंग करने हुए मैसेज कर दो। करने के लिए बोलता हूँ। बताओ यार हम लोग जाते हैं। 70 ना। हाँ 70। हाँ गॉट इट। मिल गया। हाँ मिल गया। उधर का है नहीं, जाके बैठ ले। ठीक। Still follow my art to an end. तो कोई है ही नहीं।
बिजी हो गया भाई साहब। ये तो चलो ऐसे ही चला के तो देखने लगे बाइक तो रोक। बोलो संपाई जी। वो कहाँ हो यार, रिपेयर किट दे दो यार मुझे लाके। कहाँ से लाके जाऊँ? मैं शॉप से खरीद कर, और कहाँ से? क्या हुआ, कहाँ मर गए तुम? बहुत दूर है यार, सैंडी में है। अभी आया हूँ मैं सैंडी से। पे रेस करके। लॉक पिक नहीं तेरे पे? हाँ। ऑफिक नहीं यार। एक मिनट रुक, मैं एक बंदे को लेके आना हूँ, वो भी फट गया था पहले। उसको लेके फिर तेरे पास आता हूँ। पिंग बता अपना। 43। आगे पिंग वो कर दे, फोन कर दिए एक बार। ठीक है। अरे यार सैंडी, तू सोने चला ना। क्या? सो जा। ओए, लाके दो यार रिपेयर किट। क्या करेगा? कुछ कर तो रहा है, गाड़ियाँ खराब कर रहा है। नहीं लाके दो रिपेयर किट। जल्दी लेके आओ, फोन करना है लाके। यार जेस्टर अच्छी है यार ये। जेस्टर कह रहा हूँ, कौन सी थी? स्पेक्टर। ये वाली गाड़ी पे नंबर पल, अरे यार क्या पानी में बच गया। इतने तगड़े ड्राइवर है हम, क्या है बता। लाके वैन में मारिया जरा। कोई 1000। 800 की रिपेयर किट आवे सर। ओहो, भाई से मांगे? कोई रिपेयर किट के थोड़ी मांगे हैं। बता, रिपेयर किट के अच्छा। पैसे मांगे मैंने? नहीं पता नहीं क्या पता मांग रहे तो फिर थोड़ी। क्या ड्रिफ्ट मारी मैंने। तो ठीक, जल्दी लेगा। हाँ यार, तो ला तो मार वैन में।
बैठेगा हम। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया ब्रो। पुष्पा भाव नहीं आए? उसका नहीं है, मैं आया हूँ राइडर। काफी देर से शायद आप यहाँ पे, तो गाड़ी खड़ी है आपकी काफी देर से, कहाँ थे आप? हम तो अंदर ही बैठे हैं बहुत देर से। क्या हुआ? मैं देख कर गया था, कोई था नहीं था। मैं बाहर था, राइडर अंदर ही बैठा था। बैंडेज आप पे? हाँ देता हूँ रुक। कहाँ गया राइडर? हेलो राइडर। पीछे। अरे दिख नहीं रहा था तू। आप वही मैं सीन। बैठा हुआ था ना, जब बैठ जाओगे तो दिखेगा नहीं कोई। अच्छा खड़े रहो, जादू है नहीं क्या यहाँ तो पे? वो जादू है क्या? लॉन्चर लगा के बैठ जाओ। देखो यार, चर्च है, कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। भगवान का जगह है, कुछ भी हो क्या? सकता और कोई नहीं है क्या? भगवान की कृपा। और किसी को भी इनवाइट किया हुआ है क्या यहाँ? है। भाई किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी को अच्छा प्रॉब्लम हम है ही ही प्रो। नहीं। हम ही प्रॉब्लम है बस। हाँ भाई, भी जिंदगी में प्रॉब्लम बस है हम यार। ही प्रॉब्लम है। पीडी से बहुत बहुत प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। किसका? हमारा? अरे नहीं, हमारा पूरा सिटी से प्रॉब्लम है, इसलिए हम बैठे। है सिटी से प्रॉब्लम। यार आगे चल के बंदे आए, जैसे इनवाइट किया है चर्च वर्च का, देखो ऐसे फादर गॉड वगैरह हम मानते हैं तो सही। आ गए। अब देखो ये बंदे अगर दिल बंदे नहीं आते तो क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक ये इनका इनवाइट था, तो आएंगे ऑब्वियसली। तुम्हारे और बंदे क्या कहाँ पर सही। है बाकी? आए नहीं यार बाकी तो नहीं नहीं, आए। मतलब एक ही और ही आ सकता है साथ में। अरे हाँ हाँ, समझा समझा। कोई आया नहीं, फिर मैं ही आ गया अकेला, कोई दिखा ही नहीं, सबको फोन तो चलो कर रहा सही है, था। एटलीस्ट तुम तो आए। हाँ। अरे वही ना, बाकी किसी को दिक्कत है ही नहीं। स्वामी बहुत कोई ना दिक्कत है। कोई ना, चलता है चलता है चलता है। बताओ यार, कैसा जा रहा है? कैसा तुम्हारा? हम ही बातचीत कर लेते हैं, अपना प्रॉब्लम दुखदारी बात बांट लेते हैं। सही जा रहा है बस, कैसा और जा रहा कुछ था? नहीं, बस सही ही जा रहा है बस। चल ही रहा है जो चल रहा है। सही। बाकी बताओ, बाकी तुम्हारा वो जिमी वगैरह का क्या हाल है? कॉल आ रहा है क्या? बात कर लो। जिमी भाई तो आएंगे, एक सेकंड। हेलो। टाइम लग रहा है थोड़ा। एक कोई आ जाओ, दिक्कत तो ठीक नहीं ना? है। हाँ ठीक है, लेके आ जाओ। रिपेयर हो रही है गाड़ी। ठीक है जिसकी ठीक गाड़ी है है ना वो रिपेयर कर रहा है। ठीक है। जिमी भाई तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। हम्म, आप सुनाए। समझ रहे हैं समझ रहे हैं। हमारा बस बस कट रहा है भाई। अब लोग आए कैसे हैं? वो मस्त है वो, गाड़ी वाड़ी चला रहा है, बकचोदी बेल रहा है, रात को आता है चुतिया फेलता है। वो सही है। हम जोड़ है पुष्पा और उसका, बस चलता रह रहा है बस। यार, मुझे लग रहा है और किसी की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम खत्म हो देखो चुकी यार, है। प्रॉब्लम किसी को नहीं है भाई, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मैं आ गया। देखते हैं कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा मुझे भी तो ये बहुत लोग अगर प्रॉब्लम है। कर पाते तो सही है। तुम्हें हमें दिक्कत है भाई, हम गन नहीं चलाते ना, ये दिक्कत है हमारा, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम। दिक्कत बस, सबसे बड़ी दिक्कत गन है। चला देते तो हमारा कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं। बात देखो तो सही है। जिंदगी एक है भाई, हाँ। जिंदगी एक है, इतना इतना सारा सो टास्क है मुझे सो ट्रू करना सो है, ट्रू। तो मर बहुत जाऊं तो काम है, क्या बहुत ही काम है फायदा जिंदगी में। भाई। देखो यार, बंदे मैंने, देखो मेरे बंदों को सेफ रखना है, सबको अच्छे से रखना है, तो मेरे को बचना तो पड़ेगा ही ना, और क्या, फैमिली जिंदा सेव रहना रखनी है तो तो पड़ेगा ही। देना ही, हाँ, परवाह तो करनी पड़ेगी। फैमिली, बंदे अगर नहीं रखेगा तो फैमिली क्या रहेगा? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, फैमिली गोली को नहीं चलाते प्रोटेक्ट इसलिए करना है प्रॉब्लम तो है। सोच समझ के चलना तो पड़ेगा ही। हाँ, यप, तो इसलिए प्रॉब्लम है भाई, बिना समझ के चलते तो नहीं रहता हमें प्रॉब्लम। हम भी अभी पीडी के साथ कुछ, मतलब पीडी के साथ नहीं तो कुछ ये हरकतें करते रहते। वही वही है। क्या है कर रहा है कोई, मतलब पीडी का कोई सिचुएशन चल गया? पता है कि सिटी से होके आए हो क्या अभी? मतलब मैं भी देख रहा हूँ पीडी बहुत ठंडा जा रहा है, कुछ मतलब सिचुएशंस बहुत कम। सिचुएशन तो कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से, कुछ कुछ नहीं थी। जब मोबाइल में कुछ नहीं थी मेरे हिसाब से तो। घूम रही थी पीटी ऐसी। नहीं यार, मेरा ये हो जाए ना, मैं जो लाइक जो जो भी था कन्वेंशन, या कन्वेंशन एक बार हो जाए, मैं चला जाऊँ, मेरे को काम है थोड़ा। मैं बस बैठा हुआ, कोई आ जाएगा तो बात कर लूँ। आ ही नहीं इंतजार रहा, तो हम भी कर नहीं आ रहे हैं। पाएगा तो मेरे को भी जाना ही पड़ेगा बाद में।
तो जाना ही पड़ेगा, फिर कोई नहीं आएगा तो, हाँ क्योंकि अप्रोक्स अरे कोई टाइम तो प्रॉब्लम नहीं काफ़ी है, हो बट गया। जो प्रॉब्लम सुनने वाले हैं वो रहते हैं, मैं प्रॉब्लम सुन के सॉल्यूशन लेके चला जाता मैं। बस क्या प्रॉब्लम है आपकी? आवाज़ आवाज़। कुछ फाइनेंशियल एंड बिजनेस वगैरह प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो पढ़ाई लिखाई करा है नहीं हमने, मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा है नहीं, तो आइडिया है नहीं बिजनेस कैसे चलाना है, बट हाँ हमें पता है बिजनेस दूसरे कैसे तरीके से चलाना पड़ता है, सीधा तरीके से पता नहीं है। तो अब क्या है, थोड़ा अगर सीधा वाला भी पता लग जाएगा तो दूसरा दोनों मिला के एकदम से चलाएंगे। अच्छा तो चलेगा वही फिर। सॉल्यूशन देखो, हाँ पता लगाने में देखो, लोगों का सॉल्यूशन लेने में तो दिक्कत है नहीं ना, इम्प्लीमेंट बात करने तो में सही सोच समझ के करना पड़ेगा, ये बात है। बात तो सही है, इस फ्री पर का तो जो कोई, मिल रहा है उठा लो। हाँ वही वही वही, कोई पैसा तो जा नहीं रहा हमारा। यहाँ हाँ कोई फादर फूदर तो दिख नहीं रहा यार, किसको अपनी समस्या बताओगे तुम? वही 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 मैं वही सोच रहा था सोच कि रहे हैं। कोई दिख गया तो मैं सुना के मैं जाता, मतलब ऐसे भाग दौड़ के आया हूँ, पर मैं थोड़ा सोचा कि हम लोग लेट हो गए, 13 मिनट लेट आए हाँ हम लोग, वो- मैं अब इसको ये मेरे को गाली दे रहा है, मैं उसको गाली दे रहा भाई हूँ, मैं हम सोच लोग रहा लेट था, हो गए। मैं भी 16 मिनट लेट आया। वो हम तो हाँ कंफ्यूज तुमको हो गए मैंने ही थे। भेजा था वो हाँ पिंग, भेजा ही मैंने, कंफ्यूज मेरी कंफ्यूज को हो गए ना, थे हम, हाँ हाँ मेरी पिंग भेजा था, पुष्पा ने मेरे को बताया। कंफ्यूज हो गए थे हम। अब कोई ना, अरे मेरा सुन ले तो भाई मैं चला, हाँ मैं बहुत सारे, लग नहीं रहा कोई आएगा, पता नहीं यार। लग रहा है फादर वूदर का पेट अरे हाँ बेकार हो गया आज। कोड्स, क्या मुझे लग रहा है फादर ही नहीं आया तो फादर और का कौन पेट आएगा? पेट वेट बेकार हो गया लग रहा है आज मुझे, ऐसे संडास मत में बोलो बैठे। मेरा, कैसे मत बोलो, देखा यार आंता हूँ, बट वी ओबे गॉड, सो डोंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। फादर को कुछ मत बोलो, बाकी लोगों को मतलब बोलो, मजा करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। मतलब कोई दिक्कत हो गई होगी ना, समझ से तबीयत बेकार हो गई होगी ना, मैं ये कह रहा हाँ तबीयत खराब, हाँ ये बोल रहे, पेट हूँ। तबीयत खराब खराब, खराब लग रहा है, समझ रहे हो। हाँ तबीयत वबीयत खराब हो गई इसलिए हाँ वो सब आने में में खराब लेट हो लगता गए। है, बट बात वो है कि बहुत भाग भूग के आया, कुछ फायदा नहीं हुआ है। फायदा आराम नहीं से है 1 घंटे बाद आ जाता मैं, बात तो सही लड़ लुड़ के आए हो रास्ते में मैं, है। वही समझ रहे हैं। मतलब थोड़ा और ले लेता ना, अभी आते टाइम भिड़ जाते, नहीं आ पाते चर्च तक, वही, अरे अरे, सीधा समझ 2 हफ्ते रहे बाद आते हैं चर्च में। समझ रहे। आओ जरा थोड़ा बाहर देख के आता हूँ। चलो बाहर जाके थोड़ा जॉइंट मार के आते हैं, आ जाओ, ऐसे मतलब स्ट्रेस आउट हो रहा है थोड़ा। आ जाओ आ जाओ, अरे इधर आ जाओ विंसन, उधर नहीं जाना, इधर आ जा। मैं सोचा कि पेट्रोल भरवा लाऊं जाके। ये लो कोई दोनों भी के नहीं लिए आया, दो कोई नहीं जॉइंट। है बस। हाँ सही ना, जॉइंट ले लो सब एक एक करके, मारते हैं सुट्टा और क्या। माफ 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 अरे माफी माफी। कोई ना, आई एम कोई रियली ना सॉरी। होता है। हाँ और विंसन बता यार कैसा अरे लग रहा है तेरे को। बस मजे आ रहे हैं, सूटा पीरे अकेले अकेले। बट ये पता है एक चीज, सिटी के बाहर यार बहुत चिल है, मजा नहीं है भाई, ये शांति तो है। बात तो सही है। हाँ हाँ तो कोई उनको पुलिस बोलते हैं का ना, टेवना। मैम वालों को हाँ बोलते हैं तुम उधर आ जाओ, हम वहां जा रहे हैं, ठीक है। यार मैम वाले को, हाँ एक काम करो, ये तो है ना एरिक, एरिक को बोला, अरे एरिक यार तुम्हारा इधर कोई मेस का एरन एक एरन कॉर्नर देना हमें थोड़ा, हम एरन एरन ना, एरन सॉरी सॉरी, हाँ तुम फोरम पे बेचो, हम उधर बेचते हैं। नहीं नहीं एक ही फोरम तो। पे मत बेचो नहीं नहीं हम पलीटो नहीं जा रहे, बट हाँ हमें इधर एक दे दो क्या हाल है यार, सैंडी वगैरह भाई पे बन भाई? हम भी थोड़ा बेच ले, पुलिस का टेवने से थोड़ा मतलब क्या दूर संडे रहे। पे यही लोग है क्या है संडे क्या पे भी? कॉर्नर? सैंडी पे शायद कॉर्नर है ना एक, और पलीटो पे भी एक ही कॉर्नर है बस। तो अच्छा यहाँ पे कौन, ये एलएमसी वाले नहीं रहते क्या? तुम लोग का वीट का कैसा जा रहा है? अभी तो कोई आ ही नहीं रहा, सब अबे छुट्टियों पे हैं, मतलब आते हैं कभी कभी। अच्छा मतलब करते हो कोई वीड अच्छे से, हाँ मतलब ऐसे ध्यान से, मतलब दिल से? हाँ दिल से करा है ना, मगर अभी फिलहाल कोई आ ही नहीं रहा ना, मतलब वो सीन है वो कि है। मतलब हमारे जैसे उतना डेडिकेटेडली नहीं, तुम्हारा मैथ का डेडिकेशन ज्यादा है ना?
मैथ का भी है, बीट का भी है, वो बीच में बस वो थोड़ा सामान इधर उधर हुआ था ना, जब अच्छा शिफ्टमेंट हुई थी तो सीट बेकार हो गए, उसके बाद अच्छा सीट मिली नहीं टेबी अच्छा भाई को। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सीन है। अरे सीट तो यार हम दे देंगे यार, सीट चाहिए तो बता। नहीं फिर वो अभी आ भी नहीं रहे, तो नहीं जो वीड वाले हैं तो कुछ हाँ फायदा भी नहीं, नहीं ना तुम्हें लेके। वीड चाहिए अभी, वीड फिलहाल प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहिए तो बताना। अच्छा तो ये इधर सैंडी पे तुम लोग ही बेचते हो? नहीं हम नहीं बेच रहे, मगर सैंडी पे एक कॉर्नर खाली ये है ना, क्योंकि LMC आई नहीं रही, LMC आई नहीं, क्या एलएमसी नहीं है यहाँ पे? आ नहीं रही ना, तो मुझे तो कोई दिखता नहीं। अच्छा अच्छा। और वो तोशी तो क्या भाई भी बोलते हो राइडर बोल भाई, रहे थे, तोशी एक भाई इधर बोल रहे खोल थे लेंगे कि अपना? डिसबैंड हो रही है TLMC, वो तोशी भाई बोल रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक देखते इधर हैं। पे खोल लेंगे अपना कॉर्नर। अरे ऐसे देखते हैं, ऐसे तो पर मतलब दूर एकदम पड़ से खोल जाएगा नहीं सकता बैकअप ना के लिए। डीएलएमसी के मतलब वो है ना, भी डीएलएमसी के भी मतलब जो मतलब लोकल्स तो रहते ही हैं, तो वैसे मगर एक चीज ध्यान खुलना रखना, तुम दिखते हैं कुछ भी बैकअप के लोकल्स लिए के साथ, अगर रखोगे कोई ना डील वगैरह वहाँ हो। पे। अरे आ गया किसी का आवाज आ रहा है मेरे को, एक मिनट घूम के देखता हूँ। अच्छा कोई आया? अच्छा चलो आया है, चलो आ जाओ अंदर चलो। तो चले गए यार आगे भी। तो मैं सोच रहा हूँ आए चले गए। अच्छा मुआवजा लेना है। नहीं आ रहे फिर वापस चले गए। वापस चले गए। व्हाट इज दिस बिहेवियर? कुछ चल रहा है, अरे अरे गिर रहे हैं, ये तो गिरा, आवाज आया गिरने का। आ गया। हेलो। मुआवजा कर रहे यार हैं मैं तब शायद। से लोगों को बस भगते हुए देख रहा हूँ मैं, मुआवजा कर रहे हैं शायद जा। पता नहीं मतलब भाग ही रहे हैं लोग, सब लोग भाई, मतलब समझ नहीं आया मेरे को कुछ खास, सच्ची बताओ तो। अरे ऊपर मेरा खड़े थोड़ा हो। बातचीत हो जाता तो मैं जाता यार, मेरे को जाना है मतलब। कहाँ जाना है तुम्हें? खड़े रहो शांति से, वैसे ही नहीं आते तुम। नहीं अरे काम है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, लड़ धुर के आया हूँ मैं। इतना ज्यादा लड़ लूंगा तो भाई गोली ना चला के, बिना गोली चला के ही मर जाऊंगा मैं एक दिन। अगली बार तुम लोग फेयरवेल करते रहे ना सीजे के जैसा राइडर का, वो तो बेटा चल के गया, अरे मैं तो चल के भी नहीं जाऊंगा। क्या हुआ, सीजे कहाँ चला गया? वो लिबर्टी गया है यार, विंसन बोलना मत, तो लाइक उसको ब्लड कैंसर हुआ है, तो ओ हाँ। वो था नहीं, वो फिलहाल तक सैन एंड्रेस में ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको मैंने SMH पे भर्ती था, बट कुछ दिन तक नहीं हो पा रहा था ठीक, तो उसको मैंने ही बोला सैन एंड्रेस चले जाने के लिए, वो सैन एंड्रेस गया, उधर से उसको लिबर्टी रेफर कर दिया, तो वो आया था बीच में, जब दिखा, जब बातचीत करने करके, किसी को पता है नहीं वो चीज़, बोलना मत, वो थोड़ा डिमोटिवेट वगैरह हो जाएंगे, किसी को पता है। शहर में फ्यूल भी नहीं आज यार, सुबह से ढूंढ रहा था। क्या हो गया है इस शहर को? फ्यूल, हाँ यार हमारा उधर एक फ्यूल, हमारा वो वाला फ्यूल खुल जाए ना बस। हेलो। तो मिली तेरे को कोई है? मैं आ रहा हूँ, फिर रास्ते में हूँ। नहीं खुल पाएगा वो तो। कोऑर्डिनेट लगा रखे हैं ना GPS में। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस वहाँ पे 2 मिनट बाइक में आया। बाइक रिपेयर कर दी बस। थप्पड़ खाएगा तू, है वहाँ पे खुद है। तो मैं उससे थोड़ा दूर हूँ, किसी काम से, इम्पोर्टेंट काम समझा करो। नहीं नहीं, फिर इम्पोर्टेंट काम कर, जिसके साथ कर रहा है उसको बोल दिए छोड़ देगा। किसी के साथ नहीं हो, अकेला हूँ मैं वहाँ भी। चल वहाँ की पिंग दे फटाफट। कोई इम्पोर्टेंट काम की पिंग नहीं दी जाती। दी जाती है, टेंशन नहीं क्यों दी ले रहा है? नहीं दी जाती भाई साहब, समझा करो। वो ऐसी चीजों की फिर हम निकाल के करके तुम्हें पता भी नहीं लगेगा फिर। नारे वाली फिर किट ला रहा हूँ, कोई नहीं ला रहे थे, मतलब यार ये क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं, बताता हूँ तुझे, तेरी वाली अगले दिन मिलेगी नहीं वहाँ पे, बता दी। अच्छा 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 लिख अच्छा। लिख दिया मैंने, लिख दिया, क्या लिख हाल है, ले लिख क्या ले। हाल है। क्या लिख नहीं मिलेगा। जल्दी लिख। क्या लिखूँ। जो तू करने गया वहाँ, क्या लिखूँ, क्या करने गया हूँ। जो तेरी चीज तू काम करने गया, वो अगले दिन वहाँ सामान मिलेगा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। मैं डर गया भाई, सॉरी ये सॉरी भाई।
कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। सॉरी भाई मैं डर गया। सामान दे जल्दी लाके, फिर मतलब सामान तो मुलाकात ही है। उखा जल्दी जो करने के है। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। गांजा उगाने गया ना सीधा वो, ये फिर फट गया। नहीं भाई और भैंस की आंख ये फिर फट गया यार, दिक्कत हो गई। क्या हाल है अंशु इंजन बंद भाई? होगा, चाबी नहीं मेरे पे, और पेट्रोल बोलो गाड़ी भाई में क्या नहीं है, हाल है? बता क्या करूं। मुझे क्या पता, अब झेलो। हाँ जा रहा हूँ सैंडी, गाड़ी बंद करी तो पेट्रोल खत्म हो गया। अरे भाई चलो ठीक है। आ रहा हूँ, रुक, पिंग भेज जल्दी पिंग वो 43 पे। कोऑर्डिनेट लगा रखे है ना, तो वहीं से खो, बस वहीं बाइक खड़ी है। बोल तो चली क्या है। क्या कह रहा है? वो पिंग तो है ही नहीं, तू है ही चल कहाँ वहाँ कोई पे। बात नहीं, चल ठीक है, मैं और गई, मैं तो सिटी आ गया, ठीक है। क्या बात कर रहा है, पिंग भेज, लेने आ रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सिटी आ गया, गाड़ी आ गई थी मेरी। ओहो अब गाड़ी आ गई तेरी, अभी कोई था नहीं। भाई साहब हो गया जो होना था। क्या कह रहा है। जो होना था हो गया भाई साहब, आप अपने इंतजाम करें। इतना रो रहा सेनपाई, छी भाई छी। तो भाई आदत है, बच्चा हो भाई। ओहो, हाँ भाई छी भाई छी। ठीक है भाई। छी भाई छी। ना ना ठीक है बाय बाय। ना 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 ना। बताओ यार, किसी को उंगली पकड़ाओ तो वो हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या हो गया? वो हमने सिर्फ कहा कि रिपेयर किट आ गया, रिपेयर कर दो बाइक। हम पेट्रोल भरने जा रहे थे, बाइक बंद हो गई थी। तूने पिंग दिया था, अब वो कह रहा है तुम जाओ वहाँ की पिंग दो। तो मैंने कहा नहीं दे सकते नहीं दे सकते। अब बताओ क्या गए मैंने। मतलब पहले रिपेयर किट का बोल रहा था, बोल रहा है पिंग दो, ये सब बोल हाँ रहा जहाँ पे वो वहाँ आऊँगा मैं। था। अच्छा अच्छा, वाह। मतलब प्राइवेसी का तो धजिया बना के रख दिया इन लोगों ने। कह रहा है कि रो रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई बच्चा हो भाई। इन्हें जो उसको सुनना रहता बोलो है वो रोते हुए एसएमएच पे भर्ती हो जा, उसके बाद तेरे को भेजूंगा मैं अपना पिंग। क्या कहीं बस। सैफ नियॉन के पास जाके भर्ती हो जाए, किडनी निकाल लेगा, उसके बाद मैं आऊंगा तेरे को वो लेने। किडनी आइडिया अच्छा है सैफ इसे। नियॉन नहीं तो मैं एडवर्ड के पास चले जाओ, निकाल लेगा किडनी, इसी भेज किडनी देगा तेरे निकाल को। के पैसे कमाता हूँ। हाँ तुम कमीशन ले लेना अपना। हाँ हाँ। हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ उनको जाके थोड़ा ऑफर दे किडनी का। मैं किडनी दूंगा तुम्हें, मैं बंदे भेज दूंगा, अगर किडनी निकाल लेना, हमको कमीशन देते हैं। किडनी की ज़्यादा पैसे नहीं है ना। अच्छा किडनी आइडिया है की ना। किडनी के ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे ना। करोड़ रुपए तो टट्टे बेच के मिलेंगे उसके। इंसान क्यों नहीं बेच सकते? तेज बोले थोड़ा। मैंने बोला कि बंदर एक मतलब जानवर हो के जानवर को बेच सकता है, तो हम लोग इंसानों के इंसान को क्यों नहीं बेच सकते? बात तो सही है, बेच तो सकते हैं। पॉइंट है ना। हम पॉइंट है। इंसान इंसान को बेच देते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। बंदर बंदर को बेच रहा है, मतलब कुत्ते को बेच रहा है, मतलब वो पॉइंट है एनिमल लिख लेता हूँ। ट्रैफिकिंग नहीं होता क्या? हाँ अरे ये मैंने, अरे तुम ये चीज बोल रहे हो, मैंने पूछ लिया था, रिप्लाई नहीं किया, अब भाग गया। अब क्या बोल, लिख रहे थे यार। ठुल्ले पीछे बैठे ना कभी, बोल देना कि कुत्ता मार दिया तुमने बाइक से, बोल देना, अरे बोल देते हैं, रो जाते हैं ये छोड़ डेविड देते मिलर हैं। जैसे और जिम्मी पार्कर जैसे लोग। अरे बहन चोद, किसका नाम ले लिया, बस दिन ही खराब जाएगा। तो मतलब जितना मेरे को थोड़ा बहुत ही मतलब एश्योरिटी था कि बंदे कोई तो कोई आएगा इधर बात सुनने के लिए, प्रॉब्लम सुनने के लिए, वो भी गया मेरे अंदर से। जिनका नाम ले लिया, अब तो नहीं आएंगे, घंटा नहीं आता। आएंगे भी तो मतलब सॉल्व नहीं होगा मुझसे, कोई ना है। तो होता है। हम बता रहा हूँ, हम दोनों की दिक्कत है शहर में लगता है। आपकी फैमिली को हमारी फैमिली को। हाँ भाई, गोली नहीं चलाते ना, बोला ना तुम्हें, पॉइंट तो पहले ही बोला, वही तो गोली है। नहीं चलाते। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी है, मतलब रीजन भी पता है क्यों प्रॉब्लम, बट सॉल्यूशन नहीं है, वही लेने आया हूँ। यार मैं और 5 मिनट रहूंगा, नहीं तो मैं बताना पड़ेगा। सेम भाई। घंटे से इधर ही बैठा सेम हुआ हूँ। सेम सेम।
1 घंटा हो गया मैं बैठा हूँ इधर, एक खड़ा होकर बैठा हूँ, बस खड़ा हूँ मैं, बैठा हूँ आधा घंटा खड़ा हूँ। पैर दुख रहे हैं यार, 40 साल का बंदा हूँ। तो बूढ़े लोगों का भाई कदर ही नहीं है। बैठो यार, तो बैठने की जगह बना रखी है। किताबें पढ़ लो जाके, जाओ हो रही अरे किताबें बैठ सारी। जाओ, किसी दिखेंगे नहीं, बोलेंगे कोई नहीं आया, इसलिए तो खड़े हैं चुपचाप। चलो किताबें पढ़ लो, किताबें। अरे क्या बोला यार, इतना पढ़ाई कर लेता तो थोड़ा ही ये सब कांड करता रहता हूँ। तो नहीं नहीं, आप बोलो मैथ बेचना है, बोलो वीड बेचना है, बेच ओए लेते हैं, चलो बाहर जाके रस्ते पे खड़े होकर बात वो तो कर सही। सकते हैं। एक गाड़ी छोड़ी करना, चलो कर लेते हैं, क्या है इसमें। बंदे को बेचना है, चलो बंदा बेच देंगे पानी में, नदी के किनारे। पूरे ज्यादा नहीं मिली है, सारी यूनिट हमारे पीछे लगा देगी आजकल। काम नहीं मिलता उनको भाई, तो क्या ही करेंगे। जिंदगी में काम भी रहना चाहिए ना लोगों के अंदर। बात तो सही। थोड़ा घूम के आए ऊपर से, चर्च घूमा नहीं मैंने कभी, चलो थोड़ा चल घूम के सकते हैं, आते हैं। चल सकते हैं, चल सकते हैं। आ जाओ। ये बंदा मेरा बंदा इतना मतलब थक गया, वो दिमाग पे ही सोचने लग गया। पियानो बजाना आता है आपको? हाँ हाँ, क्या? पियानो बजाना आता है, पियानो? पियानो नहीं। अरे क्या बोल रहे हो यार, गवार आदमी हूँ मैं। मैंने सुना है गवार लोगों को तो और अच्छा आता है। ऐसी उंगली चला देते हैं, टीन उन अरे डालते हैं, ये लोग फेमस हो ऊपर ही जाते खड़े हैं। हैं क्या, ऊपर ही आके बात करना पड़ेगा क्या हमको? वो भी दिमाग में है लगता है, वो फादर का वेट कर रहे हैं। आगे थोड़ा थोड़ा उंगल करके आते हैं। सुन ले अभी तो, अच्छी बात है। हेलो हेलो। हेलो। दे आर इन माइंड, नो वरीज। चलो और क्या, शॉर्टकट मार। नहीं, पैड टूट जाएगा। पैड टूटेगा तो जुड़ने में भी टाइम लग जाएगा, जुड़ेगा भी बात नहीं तो पता। सही। आग जल रहा है क्या? आग तो जल रहा है, आवाज तो आ रही है। मोमबत्ती जलना है। क्या सीन? राउंड ओए मार के क्या आए सीन के ऊपर खड़े हैं है लोग, बट कोई? ऊपर ऊपर खड़े है हैं। दो, बट बात कोई नहीं कर रहा कोई। तो देखते हैं यार, तो और 10 5 10 मिनट रहूंगा, नहीं तो जाना पड़ेगा मेरे को भाई। मैं हो गया 1 घंटा हो गया। 1 घंटा होने वाला 1 घंटा हो गया है मतलब। तुम्हें 16 मिनट बाद ही होगा, हमारा तो हो गया। है। तो अभी तो तुम करते 7-13 पाए थे आप। हाँ, तो 7 2 8 2 बज रहे हैं, कुछ ही मिनट में 11 मिनट में, कुछ ही मिनट में हो जाएंगे, तो हो गया ना। ऐसे आगे आगे पकड़ के चलो। ओह, पैरों की आवाज आ रही है ऊपर से। हम्म, भाई आवाज सही आ रही है ना? हाँ, आवाज सही आ रहा है। ओके।
चलो तो ऊपर से फिर के घूम के आते हैं। चलाए थे आप इवेंट में लिक्विड लाइब्रेरी? इवेंट में आए थे कल आप लिक्विड लाइब्रेरी के? चले आ गए। आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है। अरे कल गया था मैं लिक्विड लाइब्रेरी के फंक्शन में, बट यार बहुत दिल से बुरा लगा, मैं आ गया वापस। साउथ साइड वाले भाई मतलब ऐसे सूट ब्लेजर कोट पहन के गए थे, उनको देख के बहुत बुरा लगा। समझ रहे। सही है, हाँ कुछ देर था, बट एक्चुअली में को हैरान हुआ। हेलो हेलो हेलो, ठीक ठीक। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? बोल रही थी यहाँ पे आवाज नहीं आ रही, मैं तो नीचे चल कोई हाँ, पता नहीं लग रहा कोई आ रहा है कि नहीं। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। हाँ मैडम, हेलो हेलो गाती थी अभी उधर तो। क्या बोलो बोलो। I think Xavier won't make it on time today. ओके, नहीं मैं खड़े हैं थे हम लोग, 1 घंटा हो गया हम लोगों को तो। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, आई एम सेइंग वी आर जस्ट वेटिंग कि कोई आ यस जाए। यस, श्योर श्योर श्योर। यार Charlie, आप right? क्या चश्मे वाले भाई most of the साहब। people will be coming. Yeah, Charlie, right? Right, Charlie. Yeah, right है। कल किया था। Yeah, you called me yesterday, right? Like I was in Yep, I chase. just went for sleep. Yeah, yesterday I was in a like wall chase, so I was not able to. All right. Sorry to disturb. Fine. अभी बातचीत। आगे आगे। बुला रहे हैं, आ जाओ। Let's go. My bad. Oh. Howdy, everyone. I'm just gonna check if there are people waiting outside and just call them inside. So we are late. I mean, you guys are also late. I think all of us are late, isn't it? Actually, I'm here from last 1 hour. I'm just waiting. Wait, for I you can't guys. hear. Same. Yeah, actually, I'm sitting in the Oh, waiting. yeah. You were saying?
Yeah, I'm saying I just came and just waiting for you guys from last 1 hour. So just waiting in Yeah, this waiting even area. the old man was waiting for 1 hour. I think both of you guys Yep, were yep. giving each other's company. Yeah, yeah. Yeah. I was late. Yeah. Yeah, no You know, worries. it takes time for me to get ready. So yeah, I was late. I'm really sorry. So By the way, basically, this convention is like you guys are asking our problems like in front of everyone, or like we have to say it in front of everyone, or like privately. so you can discuss in front of everybody, like whatever you discuss, it's going to stay in the room, like no matter you know the division and like all the rest of the things. You can also talk about the common problems you have. For say it's out of your zone, you get it, like you need some extra help with something, then you can ask for it this time. Yeah, Okay. it's We can actually kind of. have a conversation personally also, right? For the Yes, solutions and all. you can bring your family here. We can have a nice conversation and then you can talk to us. And that would be different and it would be a different concern, it would be a different thing, and each of the things when you discuss or when you participate you have different things which will give you some brownie points. Yeah. Yeah. Right. Okay. Yeah, so the brownie points will kind of help you when it comes to the future things. Yeah. All right. I'm really sorry you've been waiting for so long. No It No seems worries, like no worries. I really wonder the people who are not turning up, how they're going to compensate with the problems that is going to happen after all. So yeah, That is the thing. We have some problems. That is the reason we are here. I mean it's And easy also for to check you out the guys. You will things. get something and they won't get something. It's as simple as that. Yeah, maybe. Oh, Actually, you I guys need are the from solution only. I the. don't need anything else. Yeah. Oh, okay, okay. Oh, so you guys are from. Can you Yeah, we are from the introduce? GSF, the families. I'm from Okay. Rito, And MAYHEM. he Oh, okay, okay, okay. Okay, so TikTok, we wait for the other person to join in. Whoever is there, we will start our stuff and then we will continue it. All right. Probably the bishop is gonna give one last, maybe warning, and then we just start. You know, just to remind them, just in case. all right. Oh yeah, so you guys have anything to discuss? Like common stuff like, you know, girls and food and police and then cops and then you know. Yes, that much common thing. I just want to discuss something like really personally. Like we are Oh, facing, like not me, my whole family is facing right now. So I just oh, want to okay. just discuss with you regarding our problems, and we need some solutions. We don't want to hear others our like what is our problems, because it will harm our the privacy and Hmm. our safety and all the stuff. So that is the reason I'm Makes asking. Like, sense. can we have a private conversation? So you can have a private conversation and we can give you a solution for that also. You can come later on if you think that it will jeopardize your existing problems and Okay, we your will join this family. convention. We will join this convention, but we will not You can talk participate about in. general things. I mean, Yeah. generally, like I am pretty sure when you guys start talking, there are a lot of things that is common to you all, and maybe Yeah. you can have solution to that. You get it? Yep. Like, I mean, personally, internally, all that is still welcomed. But if you really don't want to talk about something very, very crucial to you, you can come later and discuss with us and we can give you a solution. But right now, I mean, we will consult with our divine one and we will come back. Yeah. All right. All right. So Excuse yeah, me, we'll people. just yeah. Sorry for interrupting, but Angela will require presence outside for a minute. We have to talk to the bishop. Okay, sure. क्या बोल रही थी मैडम जी? पता नहीं, like they will like discuss with this convention will like basically discuss with each other क्या common डिस्कस करेगी? problems. पता नहीं हम लोगों का कोई कॉमन प्रॉब्लम है पुलिस से, खाना से,
या फिर किसी भी चीज़ से, सो वो सॉर्ट आउट है, कोई सॉल्यूशन उसका अगर निकल आता है तो वही देंगे। अच्छा एंड उसके अलावा कोई इन्होंने बोला कोई ब्राउनिंग पॉइंट्स, राइट? ब्राउनिंग ब्राउनिंग पॉइंट्स ऐसा पॉइंट्स, कुछ होगा। ब्राउनिंग पॉइंट। हाँ, ना इनके साथ हम देंगे, वो फ्यूचर में हमको हेल्प करेगा एंड ऑल दिस स्टफ्स, बट आई एम हियर टू डिस्कस समथिंग प्राइवेटली, जो बट दे आकाशी वो है ना चर्च का कन्वेक्शन, आ जाओ ना तुम लोग, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। सबको कितने टाइम बुलाया? वेट लाइक मुझे पूछने दे। 2 अरे मैं वही बस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलते क्या बोलते बोल रहे गायब हैं? हो क्या बोलते गए, पता नहीं कुछ बोलते बोलते गायब हो गए। बोला तो कुछ भी नहीं, अभी तक उन्होंने। अरे क्या हाँ, क्या गायब हो क्या बोल रहा है विंस्टन? क्या बोल रहा था विंस्टन? गए, कुछ नहीं पता। पता नहीं, कुछ तो सोच रहा। सही है, then we will not participate in, like, can't discuss our problems by like openly, like, so Not that is the also main stuff. participating. If we have anything, yeah, legal, I'll like stay we for we listen have and some, just see. yes, I just listen them, and that's where we don't have any issues for like, other publics, Yeah, because if you showed up your problems, there is a weak point for your you. enemy will take it, yeah, enemy will take it as a weak point of yours. Yeah, yeah. So just be careful. I'm not discussing It's anything, to dangerous be very for honest. us in Yep. future. Yep. Bro, I got some lessons previously, so I don't want to. Like, these guys But are there not is like some that much, common point like PD and stuff, and some PD, and city problems. yeah, like, the main problem is that right now this And I think PD guys our only. all for all For family us, the only the PD guys. common problem is PD. PD, yeah. Whenever they say like they see the guys, they are like bunch of group of people. Like Yeah, maybe they are from the MAYHEM, maybe they are from the GSM, maybe they are from the Colors, maybe yeah, they are from the other gangs or the families. They did their best. Like they will like they will just give their life to save that, to bang our ass and all, clap our yeah. ass. So that is the main problem. Like sometimes it feels like they are not having that much of fear of their life. They forgot about that. They sometimes breach No, in I in don't the think so. south side. There is They think that only this 5 or 10 guys will like just capturing this whole south side, or the maybe their territory, but they just forgot about that. There are our other locals also families. there, so they might, yep, not the families. If you consider GSF, we are not the 10 guys only. Okay, we are just that's running this. We are just guiding our family, but there are some locals, like lots of locals, like Yeah, hundred yeah. of locals over there. Right, right. So if PD breach in, we maybe not shoot them, but our locals maybe. So they will actually, not maybe, they will. Exactly. So, and they just forgot this fear in their mind. They just breach in, they just do some kind of They bad don't stuff. think about before breaching. Yep. They just get to know that Yeah, it's this up to person had them. this thing, We and have the now last solution to bang this PD guys each and every time whenever we see, or else we will also chill out in their compounds or whatever, the PD police station department, whatever, what the fuck ever it is. Yeah. अगली टाइम करेंगे, बस सीधी बात है, मैं तो पीटी में जाके बैठ जाऊँ, जो खाना गांड मारा लो, सीधी बात है, नहीं इधर लेके बात नहीं करना, ये गाली वाली इधर आ जाओ। राइडर बोलो ना, राइडर बोलो। मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, थोड़ा समझ रहा है, जाना पड़ेगा मेरे को, खाना बनाना पड़ेगा आज, समझ रहे हो? हाँ, बैठ के खाना वाना खा ले गाड़ी पे बैठ के, इधर तो चर्च के अंदर नहीं खा सकते, खाना नहीं गाड़ी में भाई, बैठ जा। बनाना भी पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो समझ रहे गाड़ी के डंगे में स्टोव रखा हुआ है, उससे बना लियो। let's see, देखते हैं कितनी देर होती है। मैं एक बंदा बुला लेता हूँ, नहीं तो भाई फिर से कोई बोलने आ जाएगा, जीएसएफ दिखता नहीं है। बुला लो किसी को। भाई हाँ, नहीं भाई,
सुनने को मिल जाएगा तेरे को। गैंग वाले लोग आके बोलते रहते ये सब कहाँ दिखा, ये पूरे टाइम फोरम पे रहते मेरे को। Okay, so I see two of you guys, and what happened to the two of the other guys? Did they go to sleep? Or the two of you? I'm alone. I come alone. Oh, you're alone. Yeah, Okay. hello. What about the other GSF guy? So let's go Yeah, upstairs. Let's Alright. start. Yep. Actually, he Okay. went for his dinner. He's hungry, so he will be. He come back. We were serving you guys food as well. We wouldn't call you as guests and like be disrespectful. Yeah, and let you guys start. No worries, no worries. I will call my other guy. No worries. Dyson, just come to this Route 68 search. I will ping you. Tell me your paper. This Route 68 search. I will 33, right? I will ping. I will ping you. Give me a minute. I don't know what it is. I've got the call. Yep, yeah, I have the call to go. Just cut this call. Look who's here. Oh! Savior! Oh my god. Yes, you missed the party, and it's just the two people. I think it's so easy for both of us. Yeah. I mean, it's their loss. Yeah, it's actually the job is easier. So, you want to call the other guy because we can't get him in after the convention starts, and when we discuss about things, you know. Are you gonna get Actually, your other? no. Actually, I will continue like solo. He is not able to come right now. He's out of city right now, so he took Okay, some time. so you might have to talk louder because you Yeah, sound can you hear me? very... Yeah, actually, I just speak like I talk that much out. Yeah, can you hear me? Yeah. Yes, Okay, you can, so- sir. Talk it up. So that's it? So that's it? There is two more It's people. just... There is two more people. Like, Okay. You guys have their number? Just call them up and then we can just quickly One of start. them is sitting There are down. I'll some just get guys that person out. downstairs. There's someone Oh, is he? downstairs. there is two Is people. he? Hey, someone. I don't know. Oh, I see a ma'am there. Yep, a lady, a beautiful lady. Can I whistle? Oh, shit. Okay, I shouldn't do. He is busy getting in phone. TikTok. So, quick question. Is there someone you want to kill? Yeah. Oh, nice. Who? One and only David Miller. Huh? David Miller. David Miller. Okay, who is that? Police officer. Alright, we have the Hydra here. Okay. So we have GSF, Mayhem, and Hydra. Okay. And we have the Angels. Okay. Crowd is Hey getting there. bigger. Hi. How's it going? It's all Gucci. How are you? Yeah, I'm good. I'm good too. May Lord bless all of you guys. So yeah, we are just waiting for the few people to turn in because they are waiting outside. So once they come in, we go into the room. If you want to call somebody in, this is the time to call anybody in because once we start, you cannot bring anybody inside. All right? Got it. Wait, let me call somebody.
Okay, this is it. As of now, yes. Maybe some people are on their way, but it's their loss if they join in the middle. I mean, if they come late, I mean, it's already so late. So, I mean, we can't wait much more than this. That's true. Yeah. So, anybody outside who wants to join in? No, right? No, I checked around. I don't see no one, so I think that's about it for now. Okay, so you guys are all set in and nobody has to come from your side as well, right? So, let's start. Okay. All right, guys, follow us in here. Have a seat, guys. Also, please keep your phones in silent as well. All right, ladies and gentlemen, welcome to the first convention. So I think Gabriel here will do the talking as well as Xavier, because I'm really not in the place to talk, because you know they don't like small kids to talk much more. So I'll just stay behind them. And That's not Gabriel, true, Angela. I mean, it's up to you. By the way, before we start, one of the people from Hydra, can you all swap places around the people to the left? Anyone, like, it won't matter who, but yeah. I just want you all to be mixed up. Anyone, either GSF, Mayhem, or Ian, can one of you all just swap sides? Sorry, I'm not able to hear you guys. Alright, guys, first of all, I'm glad that you guys accepted the invitation to this convention. A lot of people proclaimed that they would be here among our presence, but unfortunately, they might have missed out an opportunity where they could have found solutions to their problems. They could have found a way to reach and achieve what they want to. Well, maybe it is their loss, and maybe Angela will write down a small little list so that they could also receive a couple of small gifts. Yeah, Anyways. I have the list. Wait. Can I ask you a favor? Uh-huh. So whoever is here, can I get your names and your where you're from and all that? Cause you know, I just want to note it down so I can scratch few names out. After, Angel, after. Okay, my bad. Yeah. It was so exciting Alright. to actually scratch them. So guys, welcome to the convention. Before I move ahead, I'm just going to inform you all about a few things. A lot of things happen in Los Santos. A lot of people run businesses. A lot of people, like yourselves, run groups. A lot of people do things that are not completely legal by law. But as soon as we are inside here, there is no differentiation. We all are equal. There is no one who's greater. There is no one who's lesser except the divine. You just have to remember this, that if you all do have anything between yourselves, if you all do have any grudges, all of that, the space for it is outside the doors of the church. And that would never be inside here.
Second thing, which is important, is that yes, some conversations get people infuriated. Some conversations get people angry, which is all right. That's how life is. Just remember one thing. There's always a solution to the anger. The solution to the anger is not always spilt blood. So I'm just going to, since I have known about you people, I've known about probably each and every one of you here. Oh, wait. I'm just going to tell. By Yes, the way, we Angela. have some latecomers. Do they have to pay for something? I mean, they are so late. Can you guys explain why you guys are late? I guess they cannot. Okay, so I mean, don't be shy. You can talk about anything. We are from the church's side. I'm the founder of this church, so I was taking care of Oh. something and Oh, okay. All right. Okay. 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 yeah, the people from my gang are already there on the beach. So All right. So coming back to it, if people get angry, there's a way to channel it. If people get frustrated, there's a way to channel it. Just remember one thing, that out here in this church, only the divine is allowed to see or witness or create a spill of blood. Because we are here to help, but we have also some procedures kept in place. And we hope that everyone here abides by that. Because if things don't go how the divine wants it to go, well, then he takes things in his own hands. Last thing is, there are a lot of people out here, a lot of people who have been lost in the past. A lot of spirits roaming around. We believe that communicating with the spirits is a way to learn modern life, is a way to channel energy, is a way to understand how life works. The people who've just walked in, any reason for coming so late? We were actually not aware of the proper time, like we'll get a call or anything. It was informed yesterday at 7 o'clock to each and every one. The location was decided, and also an email was dropped to each and every one stating the number of people, the time, the location as well. Yep, sorry for that, All You right. can't say sorry. Then what should we do, ma'am? Maybe you can pay later. Huh? Yeah. Everything has a price. I didn't understand. Can you repeat it again? Everything has a price. One person has to sit here and the other person has to sit there. Okay. Just remember one thing, that out here, we do not want a single group to sit together, because like I said, equality plays a massive role. You all could be the greatest of people outside the church, but as soon as anyone out here, anyone in this room, that includes me, myself, or includes anyone out here, Yep. No worries. So as I was saying, out here, this might be
the first ever time we are meeting. There might be more times where we come of use to you guys, where we could help you all with your problems. But just remember, out here, everyone is equal. Everyone, that includes me, it includes Angela, it includes Xavier, it includes the people working at the church. As soon as someone steps in, everyone is considered equal, except the divine. Now about this, obviously, there was a time frame yesterday where we spoke to you guys. Well, not in detail, a very, very short conversation, just understanding who you all were. Whatever you guys informed us, we had our own research in place. We know a lot more about you than you can imagine. We know a lot more about how you all function, more than you can imagine. How about you? The people who just walked in, any reason for being late? I'm sorry. A war is going on for you. The people you're warring with are there, bro. Interesting. So you're considered spilling blood more important than seeking solutions. Have a seat. And do not sit next to each other, because out here, since like this fellow individual said, okay, let them have a seat first. Looks like the Lord has spoken about the war and blood. Yes. If spilling blood outside the church, if y'all think that y'all do not have time for the divine, like I said, he takes it into his own hands. If y'all are at war, that all happens outside the church. If y'all are at war, and if y'all do want consequences for each other, again, that happens outside the church. But if that becomes a reason for y'all to not value the time of the divine, then that war might be a result of a major loss for you, irrespective of your personal war outcome. Because sometimes some things are not in our hands. Or here, I think since I was around at Shop 7, I saw two people. I saw the people of GSF, I saw the people of Mayhem. And the divine knows their value for the time. I did also see Hydra come in as well as Angels come in at a slightly later time. But the others, just remember, this time things might be forgiven. Next time, the door might just be locked. Before we move ahead, if Xavier, Angela, if I want to say a few words, then I can move ahead with the further proceedings. I have nothing to ask for. Angel, if you, I have a if great you have idea, any. Xavier. You know what? Those who came late for the convention, they can have late stuff like maybe gifts, right? I mean, they're not really keen about it. They were very late, so maybe they don't want to have it, is it? I can keep the gifts for them for later. Maybe if I feel like giving it to them, and I'll give it to them. All right? That's on you, All Miss right. Angela. That's on you, Angela. Yes, you can figure that. That's not an issue at all. All right. So before moving ahead, guys, some of you might know each other here. Some of you might not know each other here. Some of you might know each and everything about each other.
But that is not what we are here for. We are here to start off by getting to know each other. So this isn't for me, this isn't for Angela, this isn't for Xavier. But one by one, I would like you guys to introduce yourself to the person on your right or the person on your left or both. And with that introduction, to everyone, you all can probably mention one line about yourself. Whatever line you feel might tell the person about you, might share something unique about you, might let the person know more about you. Because the more you'll know each other, when problems occur, when problems are spoken about, the more you'll be comfortable in sharing those problems. Because like it is, step 1 is the conversation. Step 2 is understanding the conversation. And step 3 is finding a solution. Step 1 and step 2 are two routes we are going to look into today. Solving the problem will help you out, like we told you all. So yeah, probably from the guy on my right with the white hair wearing the bandana. You can start off. I say we start from the right. Alright, we can start from... Hello there. Can you hear me? Yes, we can indeed. All right. So I guess it's me to start off. Alright. Well, I think most of the people know me here already. Well, my name is Bella Rossi, and I am the... Hold on, Bella. Any reason that the two new joining people are late? Am I audible now? Hello? Yeah, you are audible. कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से आ नहीं पाए. Interesting. Very interesting. Alright, have a seat opposite each other. Yes, you can continue, Bella. Yeah, so my name is Bella Rossi, and I'm the leader of the GANGSTER. We're like a small group of bunch of criminals, girls who are, who want to make big in the city for themselves. We're working on it, and we're trying hard. We're small in numbers right now, so we're just working on, trying to have more people join our cause and help us out. So if you do know some people who will be interested in joining us, please do let me know. For a good cause, obviously. We're not petty criminals. We have our mission statement is not like go ahead, shoot people, have fun doing that. All right, we have our own set of principles and rules that we very rigorously follow. So yeah, that's that. You will have Okay. fun if you want to be part of us. Alright. Just for everyone out here, don't think of this convention as just a conversation between you all and the three of us. Think of it as a conversation amongst yourselves. Because like I said, sometimes just talking to each other is the step number 1 to moving towards solving the initial problems. So if anyone is saying something, if anyone is trying to communicate something, and maybe a question arises,
maybe a statement arises, irrespective of it being good or irrespective of it being ugly, you guys can always bring it up, talk about it. Because as I said here, this is a safe space. Out here, you might talk negative about one another, which is acceptable. But that's all. If it goes one level above talking, then this might be the last convention that I will ever be able to see. So Well, make it more... Yeah, sorry go for ahead. cutting. While we're on it, then I would love to, state some stuff. So I've seen people, out of different organizations trying to, tear each other down just to climb up a ladder, some invisible type of ladder that they feel like is there to be on the top of the food chain in the city, which is totally understandable. Everybody wants to be on the top. But I feel like instead of tearing each other down, it would be much nicer if they started supporting each other before, trying to tear each other down. So I get it. Like, it's like in human nature to see somebody new and upcoming to come into a space that's, already competitive and feel threatened by it or by them. But if you trust me, you guys, if you support them, it will be much nicer and it will be much healthier for everybody to be in that environment, in that space. And at the end of the day, you will have more fun in that space, to be very honest. So instead of tearing each other down, I would say you guys start lifting each other up. On the statement, I would actually like to hear from the other people sitting on the table about their agreement/disagreement to what Ms. Bella has just said. I totally agree with her. Is there anyone here to disagree on this? I disagree. I disagree as well. डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि हम गेम चला रहे हैं, कोई आपसी We रिश्ता नहीं है। disagree as मुझे well. अपने ग्रुप को ऊपर ले Please, जाना one है by तो one. One by one. मैं दूसरों के ऊपर चलते हुए भी चले जाऊंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Actually, he has a Well, point. I thought this was like a peaceful convention, and you're entitled to have your own opinions, but I would rather have a more peaceful approach rather than that volatile kind of approach in life and in general. Yeah, but I think it's his opinion, right? Yeah, that's what I said. Like, he's entitled, and I agree with him. I'm not like opposing it or something. I'm just saying, like, I would have a much neutral and peaceful approach to stuff. The other people who disagree, can we know and understand as to what are your disagreements? You'll agree, is your disagreement the same as what Mr. Usman spoke, or is it something else? Similar kind of mentality. यार दूर से बोल देना, आवाज नहीं आ रही जो। जोर से बोलो। Yeah, I agree with Usman. He has a valid point. Yeah, he do has a valid point. The thing Depends. is, we From as a my side, family. depends. Sorry. It's all about becoming strong in the city. Yeah. Sometimes it's important. All right, so a strong word out there, becoming strong in the city. I just want to understand from each individual, what is your definition of the word strong? Because a lot of people, I know a lot of groups, I know a lot of gangs, I know a lot of people who say they are powerful, a lot of people who say they are weak, a lot of people who say a lot of things about themselves. For example, me as a person, I will consider myself strong, but strong in certain aspects. So if you're all, I assume, I mean, as far as my research has gone, you all are from some or the other group. So if you're considered some or the other group strong, what is the basis of considering them strong? What is that one thing you'll look at that tells that if a group is strong or if a group is not so strong? Because weak, I don't like calling people weak, to be honest. I mean, it depends on the resources they have. Yeah,
and the To communication be skills they honest, have. in a Trust nutshell, of family. like the mentality here is like who can shoot more people, to be honest. And what? No, it's not even about shooting actually. It's more like the resources they own. I mean, it's more like the power, right? Who has the most Yeah. amount of power, right? I mean, at the Yeah, end but of the what does day, that power, how does that power, is given to them? Where do you obtain that power? That power comes from yes. numbers plus resources plus influence. And how do you influence people? By dominating them. And how do you dominate them? I guess we all know that. So what's wrong Hmm. in that? इसमें गलत क्या है? I'm not saying it's wrong. I'm just stating it's a fact. Negative way में बोला नहीं कि everyone knows. So your presence, Everyone knows. your amount of the communication with other people. There are a lot of The, things that makes the you influence, perfect yeah, and I makes you agree. stronger. The power means putting small amount of those Bit जोर से. things in everything. क्या आवाज है? हेलो. जोर से जैसे किसी का स्ट्रेंथ पावर डिटरमाइन वैसे होता है जब वो कुछ वैल्यू ऐड करे उसके जगह में. नॉट it doesn't include wars, those things. It includes also the values you put in there to control that area. Whole. This war is not the ultimate of the power, which others. So I would want to ask, like, what values do you guys have? So before we go into the thing is now, since Bella has given her introduction, I would like a quick round of introduction from everyone, because I am unaware personally as to each and everyone's names. I know some of you guys here, not everyone, and I wouldn't want to just call people by pointing at them. I would rather call people by their names if I want to address them. So since Bella has given an introduction, the person to the left of Bella, can you all move around and just keep by one telling us your name and telling us probably one line about yourself. And the one line could be anything about you. Let me gonna start. Yeah. Hello, I'm Akashi from Hydra. Akashi Kakiyogi. About me, that's okay. Nah, bro. I don't know how to explain myself though. You don't I'm know the pretty good motive with of your life. No. It could I be go with the something flow. like you like or something. You could Yeah, talk I like about blood. that. Anyone talking? Because I like Oh, blood. so you're here for blood? Okay. Yeah, Okay. I like blood. I love blood. Okay. Oh, okay. Me too. Okay. That's similar. Okay. So this gentleman next. मैडम जी मेरा नाम है गोल्डी सिद्धू, ठीक है. गाड़ी चलाना हमारा काम है, गोली चलाना हमारा धर्म है. इतने बड़े आदमी हमसे पंख लेने वाले 100 बार सोचना पड़ेगा. वाह वाह. And next. मेरा नाम उस्मान है. मैं मैंडम से हूँ और लाइक ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि एक लाइन में कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोल देता हूँ कि जैसे कि मेरे लिए एक चीज है कि मेरे अपनों में मेरी रिस्पेक्ट है. Respect. So one one's blood, the other one's respect, then the other one's money. Okay. Okay. Nice. We have very nice group in this corner. Okay. The next guy. Myself Alexander Diaz from LSD. We believe in putting values to our area. It doesn't depend on money, anything. It depends on everything. Oh wow. One end of the table begins with peace and the other one ends with values. Wow, what a variety. Okay, let's go. Next guy on the next side. Let's go, guys. We don't have time. TikTok. मेरा नाम एरन सेनपाई और मैं मयम फैमिली से हूँ. पलीटो में रहते हैं हम, और हम 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं. एक मयम मोटर क्लब और एक फैमिली. और अब मेरे को लोगों से रिश्ते बनाना पसंद है. Okay, next guy. Yeah, Xavier. I'm Future Paul from LSD. Pretty much, I like to stick around with my boys who I value,
they probably put most of the value in my life. So, like, my main motto is to protect them at any cost. I'll try to be peaceful initially, but if I need to get blood on my hand, I won't mind doing that. All right, next, Mister. Yeah, myself, Ryder. I'm basically from the GSF. I mean, you can call this the families. Basically, I'm from the San Andreas. I love to do work in a smarter way, not in that than like it's using guns and all the stuffs. I love using guns, but not every time. If something works in a smarter way, we will do it. And love to take care of my homies and my homes. That's it. Understandable. Next. Hello, can you hear me? Yes, we can. My name is Kabir and I'm from Mandam. I'm just an ordinary guy, nothing much about me. I like to just kill people for fun. I see. Well, there are two people in the Bloods. Okay, next one. Yep, my name is Din Jones and I'm from Rust, and I'm good at conversations, but if the things go south, then I can handle it with my boss as well. Can you repeat your name once, please? My name is Dean Jones. Yep. Dean Jones. Okay. This is a very good gathering. I see some values. My God, somebody talked about friendship and stuff like that, and then there are people who want just blood, and then there are people who are just greedy. I mean, we stand for values, so of course we value whatever whoever says about values, trust, and what else are we working for. So I also believe in smart work more than like hard work, though obviously we all want money and blood. What's anything without some blood in it? Isn't it so boring? I mean, so I understand. See, I see that people are from different groups, but they have some mutual understanding among themselves. So I think we can all come to a conclusion that whatever we discuss on this table, maybe we can have some fun and maybe we can have some conclusion from it. All right, guys. Yep. Oh yeah. Yep. Yep. All right, I just missed out on two names. That is the person from Mayhem and the person to the left of Mayhem. I think Gabriel, you're getting Future old. I am Yeah. indeed. Okay. Yeah. My name is Eren Senpai. My name is Akashi Chal. I'm from Hyderabad. So one is Akashi and the other one was? Eren. Eren, all right. Alright, okay. Now that we know each other's names, now that we know each other as people, one thing that a lot of people had similar among each other was the act of indirectly or directly seeing blood. I just want to understand, from where does this fascination of either taking a life or seeing blood or taking down people, from where does that fascination arise? What makes you feel the need, the craving, the lust to do that? Well, speak up. Okay, now you can continue with the banter about the inequality and the injustice and the bloodshed for no particular reason. Yeah, I think that's where we left out, right? So what else is it bothering you guys? I mean, I clearly understand it's for the power division everybody is hungry for, but what else?
You guys have no other issues? You're just hungry for power? That's it? Resources? Nothing else? रिसोर्सेस भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है, स्पेक भी हो Resources सकता like है, what? एरिया भी हो सकता Resources like है। जैसे what? लोगों के लिए तो रिसोर्सेज यही होते हैं। अच्छे Yeah, can you hear me? Yes, we can. Yes, we can. I think resources क्योंकि आजकल like कम guns. So what is life without a gun? There is peaceful life, but there is just some PD officers. They don't have to Peaceful live but with fuck. peace. Officers. That's Yeah, true. okay. I would agree. That's Peaceful a but fun fuck. topic to raise because I understand that since you guys have spoken, कुछ लोग हैं जिनको जान लेना पसंद है. But now मुझे पता है what you guys do around the city. And each and everything you all do involves the involvement of an officer. So let's make it more friendly for now. Because I have a feeling that the way the conversation has started, y'all might snap at each other. But before we get to that, let's look at the person, the people, the group of people who probably cause a pain to your lives, your immediate lives. That is the officers. Has anyone out here faced anything specific that they would want to talk about, that they would want to bring out from their chest and not keep it right inside them? नहीं पूछो भैया, अभी किसी ने शुरू कर दिया ना, हर किसी में इतना भरा हुआ है ना पीडी का। वो ये जो भी भरा भरा है, I don't want you guys to keep it inside you. Because ऐसा हो सकता है उस्मान कि you might have a problem and say a person from the right, let's say Mr. Eren has already created a vision जिसपे एक solution हो. I'm not saying you all can't solve your own problems. What I'm saying is अगर एक दूसरे से बात करोगे about these things जो वो mutual problems होते हैं, ऐसा हो सकता है कभी ऐसा हो कि तुम्हारा प्रॉब्लम किसी और का सॉल्यूशन हो या किसी और का प्रॉब्लम तुमने सॉल्यूशन निकाला हो और मे बी सॉल्यूशंस ऑलरेडी है बाहर बट कभी बात नहीं हुआ है तो कभी पता नहीं है. I would just say that everybody here has made it very clear that they're not running a charity organization. So even if there is a solution, nobody might be interested. I mean, it's up to them to share. If they share, they get a brownie point. What about that? Huh? Interesting? Huh? You get a what? You get a brownie point. You know brownie points? You know? Browning, high power. No, not the browning dummy. Brownie point. Oh, brownie. Yeah. Okay, got it. My bad. My Guys, God, stop it's thinking about browning so much, man. Why does it always start with the guns? You guys are so. What is it? Are you guys worried about some guns? Is it the first thing that you guys are worried about? I feel like that's the first question you want to ask. Is it? Huh? Come on, you don't have to be shy. You can ask anything to ask. Come on. Okay. We don't have to make it so formal. What is it you want to ask? What is this meeting about? What is this बुलाने का meeting मकसद about? क्या है? Anything. It could be Alright. like a solution to whatever you guys want in your life. Anything. All right. What if I So want the a thing meeting? is What if you want? You know what I well, want. well, I'll tell you all directly about why we are here. A lot of people are already Yeah. aware about that. But yesterday we came around meeting a lot of people. बहुत लोगों से मिले हम. Before I continue, does anyone have any preference out here whether you want me to communicate in English or Hindi, or it doesn't matter? Doesn't matter. Doesn't matter, right? All right, okay. Okay. So we came here yesterday talking to you guys. And the thing is that a lot of times in life, you'll face a lot of problems. Sometimes the solution is right in front of you. For example, after hearing your introductions, if somebody does something
or might just take him down as a solution. यार भाई साहब But there might be times. सॉरी टू इंटरप्ट हिंदी में अच्छा लगेगा। ठीक है, हिंदी में ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने एक प्रॉब्लम दिखे एंड तुम्हारे लिए वो सोल्यूशन है कि उसको मार के फेंक देना, एंड तुम लोगों करके वो सोल्यूशन निकाल देते हो। बट ऐसे बहुत सारे टाइम्स होते हैं जहां पे तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम होगा, इसका सोल्यूशन तुम्हें नहीं पता है, इसका सोल्यूशन शायद से तुम्हें मिल नहीं रहा है, या जिसका सोल्यूशन मिलने के लिए यू रिक्वायर कुछ चीजें। दिस स्पेस एक जगह है जहां पे तुम ओपन अप हो सकते हो, तुम लोग बात कर सकते हो, नॉट जस्ट एंजेला, जेवियर एंड मी, amongst yourselves. Because एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर हाइड्रा को एक प्रॉब्लम हो रही है एंड उनको एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और वो सोल्यूशन एंजल्स के पास है, इट माइट हेल्प आउट हाइड्रा। और अगर वही प्रॉब्लम का किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, then there is Angela, Xavier and I to look into that and help with the solution. तो जब तक अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करोगे, जब तक अपने अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करोगे, तब तक सबको नहीं पता रहेगा व्हाट आर दिस प्रॉब्लम्स, और तब तक कोई सोल्यूशन निकलेगा भी नहीं। अभी एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी देख लिया है, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन। इफ यू गाइज हैव ऑलरेडी हर्ड कि तुम लोग ने क्या क्या बात की अभी तक, एक प्रॉब्लम ऑलरेडी है एंड उसका सोल्यूशन इज ऑलरेडी इन द वर्क्स। तो वही है, द मोर you'll speak up, the more you'll talk amongst yourselves, the more you'll talk to us about your problems, higher chances है कि कुछ ना कुछ solution मिले। Okay, I have a So question. think of it as an open forum. You can just talk about any problem, anything in this world, does not matter. Okay, can I ask something? Mm-hmm. Why do you or the church care about our problem? Well, Like, how to be does it honest, benefit you guys? To be honest, we believe in just one thing, that is the divine, and we go by his command. Now the thing is that what we understand is that everybody, सबके लिए एक जिंदगी है that you didn't sign up for. कभी कभी it's friends, कभी कभी it's family, कभी कभी it's the way you're born and brought up. तुम्हारी जिंदगी कैसे बन जाती है। इसलिए जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि you guys want to kill people, maybe there is a reason behind that, and the divine always gives people an opportunity to change, not change for the good or not change for the bad, but change. And the only way for a person to change is if they get help. I've been taught to change, but I wouldn't change until I got some help. And as soon as I got help, I believed more that change in life is very possible. So if you guys are worried as to why we are bothered, we believe that it starts from here, where probably if we put all of you guys combined, you all can walk over Los Santos. However, if all of your problems are solved, if all of your problems are addressed, each and every one can live a great life. Great life how you want to live it, not how somebody tells you to live it. So yeah, we might be people who might just be a messenger, but all your messages are going to reach the divine. Still not convinced? Yeah. Still not convinced? I get it. No. Oh, I you get it. Okay, so everybody convinced? भाई साहब ने जो बोला अगर हिंदी में पता लग जाए तो काफी बढ़िया होता। हाँ। नहीं, आपको अभी समझ में आया? Like any doubts कुछ है? अभी doubts का हिंदी तो मुझे पता नहीं, तो I'll just skip that. मैडम इतनी तो आती है, अभी तो नहीं है कोई डाउट। अच्छा, तो आई गेस हमारा आइडियोलॉजी और हम क्यों आपको हेल्प करना चाहते हो, लाइक आई गेस यू गाइज आर प्रीटी मच श्योर।
अभी क्लियर है इस बात पे, राइट? No? Yeah. Still some doubts, isn't it? It's like, okay, let's put it simple. Okay, he is very complicated. This old man talks a lot. All right, so let's put it simple. All right, you know what? We are employed by the church to take care of you guys. All right, simple as that. Okay, so since we are more concerned about the souls who are so torn and who doesn't have anybody to talk to, we are here for you guys. And what are we benefiting from it? We are employees of the church, and somebody has to listen to you, right? I don't think you can go to the cops or the authorities or anybody of that sort, right? I mean, you guys have all been in trouble. I don't think that's one of the reasons or the the solution to any of your problem. So you can come to us, who is ready to help you guys, not thinking you guys are criminals or any kind of maybe terrorists. I एक mean, प्रश्न I है would say, हाँ. मैम, देखो जैसे आप बोल रहे हो अगर कोई दिक्कत है नॉर्मल सी, वो तो हम अपने भाइयों से भी डिस्कस कर सकते हैं। True. But there are problems जो आपके भी beyond होते हैं, right? आपके discussions के beyond होते हैं, आपके जो friendly banter के भी beyond होते हैं, जो आपके हाथ में नहीं होते हैं, right? Not everything you have a solution to. Then you would be the most powerful whoever family or whatever you call yourself. But I don't think anybody has reached that height, right? Yet. Is it? Or somebody is? Can somebody claim to be one of the best or the most powerful or the most richest or the most resourceful? Oh, one person from Mandem says it. Does everybody agree to that? Are they the most powerful or the untouchable group of all? Is it? I don't think so. Nobody is agreeing. So why? If you have Also disagreeing. You disagree, yes. So that is the thing. If you have the answers to all the questions, then you would be one of the most powerful people in the city. But of course, you're scared of the cops. Of course, you're scared of the authorities. Of course, you're scared of each other. That's why you are having so many resources, building each other's walls up. So of course, there are reasons you want to, consider as some tricky situations. So this is the only chance you got to actually talk about it. I mean, feel free to walk from here, walk out. Like, there's a door. If you don't have any issues, you don't feel like, okay, this is a waste of time, I'm just wasting my time here, you can always walk out. Nobody is pressurizing anybody to attend this convention. But if you are part of this, I would actually say it is time for you to speak up. So guys, जिसको भी interest नहीं है to talk about their problems, जिसको भी लग रहा है कि they have all these solutions, they can leave right now, and we can talk to the people who actually want help. Yeah. So I'll give you all a minute. Mr. Usman, you'll have to थोड़ा static आ रहा है. अब बेटर है? हाँ, अब सही है. अब सही. मैं ये पूछ रहा था आपका नाम क्या था जो बोल रही? Oh, me. My name is Angela. ना Yes. वो जो दगाए गए उधर खड़े हैं, दूर खड़े हैं, बीचों बीच एकदम बीच में खड़े हैं. Xavier. Oh, Gabriel. गेब्रियल जी, मैं ये बोलूँगा कि हम सब यहाँ आए हैं, सही है. अब हम सब आपको इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि हम और डीप में बताएं आपको अपनी जितनी भी वो मसाइल. Because everyone is having one thinking in their mind that अगर हम लोग कोई आपको प्रॉब्लम्स बताए, अगर ये आप किसी और को आके बता दो तो दिक्कत अगर कहीं और से आ जाए. Very honest. See, let's say कि मेरे को किसी से दिक्कत है एंड वही सेम बंदे को मेरे से दिक्कत है. So how would you solve that? Like there should be a preference, right? कि आपका कुछ एक preference रहेगा कि भाई इसको help वो balance out कैसे होगा? That वो हमारे ऊपर. And one more thing, why should we guys trust? We are not asking you guys to trust us. तुम लोगों को trust करना है, तुम लोग trust कर सकते हो.
तुम लोग को ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं कर सकते हो. But in the church, to the messengers of the church, things remain silent. We don't go around talking about your problems, talking about your issues to the world. We only talk to one person about your issues, and that is the divine himself. So it is up to you. देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं. सबसे पहला रास्ता वो है कि अपने प्रॉब्लम्स बस देख लो अपने से एंड ट्राई टू फिगर आउट सारे सॉल्यूशंस. अगर मिले तो सही, अगर नहीं मिले तो ठीक है. And you all can go enjoy your life right away. Second option is that you guys talk about your problems, believe in us, and see results in the near future. But अगर कोई step 1 choose करेगा, हमें दिक्कत नहीं है. हमें we are not here to force people. हम किसी को ये नहीं चाहते कि you're forcing people to talk. But अगर कोई चले जाता है and say 10 days later, 20 days later, 10 months later, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है that is not solvable, then this day will be remembered. Because from here हम लोग personal conversations कर सकते हैं लोगों के साथ, personal conversations कर सकते हैं groups के साथ. But before we do all of that, you guys have to understand each other. And जब तक तुम लोग एक दूसरे को नहीं समझोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी, प्रॉब्लम्स का कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा. तो वही है, ट्रस्ट करना है कर लो, ट्रस्ट नहीं करना है don't. But the people who speak are the people who will be in benefit. So I have a question to all of you guys. आप जो कल हमको बोल रहे थे कि what are the reasons behind तुम लोग as a group क्यों मतलब एक साथ, why did you guys be as a group and all that? So I have a question. So you guys believe that you don't have anything else in your way, and or is it because, as somebody said, ki it is very difficult for you guys to believe in us? Do we have to literally prove ourselves to stand right in front of you and listen to you? I mean, Gabriel, they do have a point, you know. Maybe they have been seeing so many bloodshed, they did not see any trust in other people, they only believe their own family members, they're finding it hard to share things in front of us. It is kind of common. Xavier, you have anything to add on it? Like, do you think so, or Gabriel is right? I mean, they should just trust us. Gabriel is right, and obviously will trust us. What do you? So Gabriel, what do you think, huh? So they are saying that they do not trust us, they do not want to talk about it. Bella here tried her best to talk about something at least, but these boys do not want to share anything at all. So disappointing, all of you guys, when they are talking about money, blood, trust, friendship. I thought something would come out of it. I'm really disappointed in all of you guys. Well, you can't trust everyone. और से बोलना यार जो भी I feel like they're just, there should have been some kind of icebreaker in the first place. Maybe they're just a bit hesitant to open up and share their problems. एक बात बता दूं यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते. तो ये ऑनेस्टली बता, तो वो अपने मसले, पर्सनल प्रॉब्लम किसी और सामने, जो इसको शक्ल ही नहीं पसंद जिसकी, उसके सामने क्यों देते? एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं. अभी LHG और हाइड्रा की वॉर चल रही है ना, ये दोनों सामने बैठ के क्यों डिस्कस करते हैं? That is a fair point. फिर मैम ऐसा भी हो सकता है जैसे हम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, जैसे हम यानी प्रॉब्लम बताना, अपनी वीकनेस बताना. Yeah, it's basically you're opening up your weaknesses in front of them, and they're gonna use it. So you are hesitant because you don't really want to look any weak in front of the other family when you're sitting beside them, right?
Okay, fair point to not discuss about your inner feelings and your disagreements and your insecurities in front of your enemies or so-called families. So I understand. So you guys feel like you don't have any common enemy, which is also very मैंने नहीं interesting. There's a common enemy. पुलिस ही है सबकी पुलिस ही है Police. कॉमन और कॉमन मैं भी ये भी पता है Oh, common? ये भी पता? कॉमन प्रॉब्लम जो है वो सबकी गन्स ही हैं अभी तक की कॉमन प्रॉब्लम गम है और कॉमन बंदा पुलिस है सप्लाई का कॉमन प्रॉब्लम और कॉमन एनिमी Yeah, enemy is the department. कॉमन एनिमीज पुलिस, क्योंकि पुलिस खुद आके उंगली करते हैं, खुद जाके मरते हैं, उसके बाद उनको गन लाइसेंस रिवोक करना होता है, करेंगे उसके फिर बाद रंडी रोने करेंगे, उसका फायदा क्या? अच्छा What do you mean by खुद ही आके उंगली करते हैं? What do they do basically? they just comes inside अच्छा। compounds and just talk shit and just Oh they're my not having God. something and they're just waiting There are it, some not having it in the officers pockets. वही जिनका कुछ लोगों के साथ पर्सनल थोड़ा चलता है And this is common for all of you guys, right? Who are these officers you're talking about? Like some common officers you said, right? So all of you कुछ अफसर ऐसे होते हैं जिनकी जबान नहीं रुकती, समझ लो, वो बड़बड़ करते रहते हैं, फिर मुक्कियां भी खाते हैं, गोलियां खाते हैं, फिर भी बड़बड़ करते रहते हैं। अच्छा, डेविड मिलर, जेक मैवरिक, और कौन? अजय ठाकुर, Jimmy. Gordon B. Gordon B. So let's go one by one. Who do you think is a threat, or do you think they are like time pass के लिए हम कुछ भी they कर are not सकते हैं threats, उनको they are not threats to us, They're not but the threats. thing is There's a power Uh-huh. shift right now. Oh, there's a power shift. For us. There has been a power shift right now. Yep. Who is the most? I mean, who is causing the most amount of headaches among these officers? Jake Maverick. One of them actually. different for every gang I think so like हर किसी का किसी ऑफिसर के साथ पर्सनल चल Yes. अच्छा, but But I more think in common, Jake. it's the cops itself. Yeah. मैडम देखो एक चीज बोलूंगा, हर एक अफसर का अलग अलग होता है तरीका उंगल करने का, उंगलियों की वजह से वो ऐसे टारगेटेड है। अच्छा, तो एक एक गैंग को एक एक पुलिस ऑफिसर टारगेट कर रहे हैं कि ये जो 5 ऑफिसर्स के नाम बोले वही लोग आप सबको टारगेट कर रहे हैं? टारगेट नहीं करते, वो उंगलियां करते हैं बेफालतू। उंगलियां करते हैं फालतू की और फिर खुद ही जेल में डालते हैं। आपके घर पे आके आपको गाली देते हैं? करता है। They are thinking that they are the most powerful in this city and all वो this stuff. प्रोवोक करते हैं हमको भी कुछ हम उनके खिलाफ करें, फिर वो हमारे खिलाफ एक्शन ले। Oh, okay. Interesting. Xavier, I mean, I heard 5 cops. Did you hear the same, Gabriel? Yes, I heard 5 cops. Yep. Yeah, interesting. 5 cops. Bella, आपको कोई मतलब आप लोग को कोई ऐसे उंगली करते हैं, आपके घर पे आके गाली देते हैं, ऐसे कुछ करते I हैं mean, कोई? it's not necessarily only. So if we're committing crime, Oh. they're gonna come after us. It's just they're doing their job. हाँ, अगर कोई उंगली कर सकता है to other people, but for till now, it's nothing like उंगली towards me or my people. Oh, so you do लोग believe दिखते भी that नहीं हो cops ना are just ज़्यादा। doing their work? Oh, आप लोग wow. ज्यादा दिखते भी नहीं हो ना वैसे। पॉइंट्स है। और लड़कियों के लिए तो हर कोई सॉफ्ट पॉइंट रखता है पुलिस वाला करता है। Is because they we are have here for a soft long corner? time, so we have observed for a long time. Rather Oh, than they have soft corner towards girls. Oh wow, interesting. I mean, this is fun. Okay. So, but Bella, आप बोल रहे थे कि they are just doing their work, right? Okay. I believe we have got enough information for the day. I mean, wait, we are just getting into the fun. I mean, isn't it, We're gonna Gabriel? keep a little fun stuff a little bit away for a time, you know? Yeah, I mean, I heard Jake Maverick, is it? मैं And एक then और there नाम is ऐड करना चाहूंगा, अमीर बॉयका। Amir Boyka. Okay, Gabriel, you note down. So, yeah, so can you guys just tell all the names that you all just mentioned again? Whichever officers are creating problems, can you all mention their names again? Gordon B, Amir Boyka, Jake Maverick. Jake And Kaushik Ahmed. David Miller. Kaushik. जिमी ऑफिसर जिमी। David Miller.
Amir Barka, Officer Jimmy, Jimmy. and then Eren Sage. Tom Yeah, Reeves. with Jimmy, I would पूरा high agree command ही 100%. He's been a nuisance. One of Tom Reeves. और एक और अपना Michael Hans. Even Bella is saying Jimmy is an issue. Oh wow. So we are actually on common grounds now. We have some officers who are actually doing some very unforgettable things to our group. Okay. We are all in unison right now against the cops, which is good. That's what I was expecting, which is a nice part to start with. Some dirty cops and some bankers. And so, how did you guys deal with it so far? Like, did you take them up? Did you cut their fingers off? Did you shoot them? Huh? No matter what you do, their attitude won't change. Yep. What do you mean? You cut their fingers off and they still behave the same? Yeah, we tried everything with them. मेरा नहीं. Usman. ये बोल रहा हूँ कि वो सुधरते नहीं है वही है. Yeah, they're never gonna change. They're just seeking for a option like when they can like fuck our businesses and all the stuff. जैसे मैडम हांस देख लो, इतनी पिटाई खा चुका तो भी टेररिस्ट बोलता रहेगा, बट फिर भी. अच्छा, मतलब जितना भी आप लोग कुछ भी करें वो लोग सुधरते नहीं हैं. आपके घर पे आके आपको गाली देते हैं, राइट? Which is so wrong. I mean, doing their own business. Okay, I understand if you're trying to steal some of the goods and then you get caught. Okay, that is risky business. That's of course. But coming into your house and abusing you and trying to do something to your own people, that is unforgivable, right? So, among these people who has done that, I'm not talking about the fact that you went and tried to rob something, got something Amir into a Boyka. sticky situation. Amir Boyka? Everybody agrees? Jimmy मीर बॉय का Sage. जिमी हो गया, जैक मैविक हो गया. Eren Sage. Adam Rogers. Eren Sage. Okay. So these And people. it is also there. They also try to hamper with our employees in our business. They use slang words. So your support is also in that list. So Mr. Eren Sage, Amir Boyka, Jimmy, and who was the fourth guy? I forgot his name. What was his name? Jake Maverick. Gordon B. Jake Maverick and Gordon B. So we have the 5 people. Okay. What was the name? Gordon what? Gordon B. Gordon Only B. B. Alright. For ball. So Bella, out of all these 5 people, only you have problem with Jimmy, right? And और मेरे को भी है Boyka. जिमी से. Boyka. Maybe we Yeah, should Amir start Boyka with as Mr. Boyka. Can you guys hear me? If you guys got Yeah. a chance to meet Mr. Boyka, what would you guys do? Like, I would really Kill like him. to take some points. Kill him? What is that? That What is fast? that? That fast? Yeah. Cut his I mean, head? I Maybe wouldn't that's... necessarily kill him, but I would like maybe Cut like his hands and teach just him a give it lesson to the to just mountain time. stop trying it at a certain point. Directly cut his Oh, head. okay. That's... So cutting his head wouldn't stop anybody else from doing it again, right? You guys said they don't listen to you guys and they keep coming to your house and doing this banter. Maybe we should talk about some other Am I audible? ideas. Am I Yeah. Yep. Yeah. They just want to just cut their hands and just feed it to the mountain lions. They deserve it. Just Okay. So we got some ideas. Xavier, would you want to spice it up a bit? Maybe they were talking about cutting their hands and feeding it to the mountain lions. That's a good thing. I mean, I can improvise it. What if we strap him to a chair and then we cut his fingers off and feed it to the dogs and Calm down, kind of... Angela. One Oh, second, my Angela. bad. Not Dogs the are dogs. loyal. Angela, not Dogs the are dogs. loyal. Dogs deserve Dogs better are- food. Oh yeah, my bad. Maybe we can have our bishop's pet. Maybe he will love this. Yeah. I feel like cutting their fingers is only gonna make them angrier. Okay, And so they're do y'all gonna come think, after with do more y'all vengeance. think the officers, besides these people, okay, like all the officers combined,
do they have that any one thing that you feel that will hit them the most, that will affect them the most? Cutting off their That's like resources. cutting off their resources. All right. No, they are from the government. They'll have a lot of I mean, resources. for that we'll have to hurt the state because state is the one who funds them. Yeah. You just I need to mean, blow up come the on. state then. Let's What if just we do rip it them more off their powers? discreetly. Let's just do something more discreetly. So see, we are again going back to resources, power, and the things you guys know. Think out of the box, right? You have a guy, you have a set of guys, you really want to hurt him or them. So what would you do to actually hurt them? Just think out of the box, right? Think out of power, think out of guns, think out of resources, whatever it is, ranks, Well, whatever I it mean, is. you can Take out the physically most harm precious them, thing but of their that's life. just not gonna help because. No, what if we remove them from their position? Yeah, that will be a like a like kicking trap on them. their ego. No, more Yeah, like it'll be a big hurt to their ego, and they won't be able to Like do trap them anything in a about false because crime. one thing I've observed. No. So one thing that I've observed is these PD officers, especially in the higher ranking, they value their rank and their reputation more than anything else. So if you take that away, all they're left with is literally nothing. Maybe a Because bit they of need to climb hurt up the ego, ladders yeah. once again, so they get pissed off. Yeah, that's okay. that is the only thing that's gonna hurt them way more than anything. Okay, so we strip them of their reputed ranks or status and make them seem like nothing in front of the other people. Then they become like a joke, right? Then they can't come to our homes and make fun of us. No, That's a good idea. then they become liable to their higher ups. They Okay. cannot do anything stupid like this. So are you trying to say that maybe we trap them in something and then they will look like these 5 set of cops? Maybe it will seem like they are not reliable, like unreliable officers in PD. Is that what you guys are suggesting? They will just be fools falling in the trap. Okay. That is something. That is something. Okay. So we are not gonna hurt them physically. We're just gonna strip them of their powers for the time being. Okay. Xavier, you wanna add up something to it? You have any ideas up your sleeve? Like, I mean, these people have something I in can add up common one now. thing more. Yeah. Yesterday only I saw an officer. Okay, he was training. He was trying to Okay. just having fun with other officers, but they showed their powers and he got pissed off and he just went away in his car. So the power is the main thing to take them down. So I think power, respect, and their image in front of other people, right? No, But it's again, not it our comes people to in front the of every people. in a way, At the you end of guys the is day, it's all power. That's what it's power. all circling back to. Yes, we come back again to power. I mean, this is a very good eye opening from you guys. Actually, we were here to see more like problems and things, but I actually see what we were trying to do is much more than that, because all you guys are seeing right now is 3 things: power, resources, and money. So problem here is it's much more than that if you really want to rise up. But yeah, about the cops, we can do something about it. But talking about what your insight is as a family or a group is still not clear for all of you guys, which is pretty disappointing. I expected few of you guys to have some, clear cut idea on who to target, what not to do, and what to do. I apologize, guys. I will need to be right back in just a minute, alright? Sure. So yeah. So another thing about you guys maybe want to focus on other than cops, anything else? So Bella here had a nice option or whatever she was trying to prove, that was she was saying that
we all have to work together. I mean, I do understand you guys come from different background, different principles. If you guys really want to be all goody shoes with each other, you will be one family, not different families, isn't it? I understand from your point of view as well, but as we said, we have some common enemies, and they are coming into your house and making a fool out of yourself. Even if you shoot them, if you do anything to them, they're still taking. I mean, anybody wants to step up and do something about it? I really would like to see some participation for this. Anybody wants to work on this out of you guys? मैडम जी हिंदी में ट्रांसलेट कर देते तो हे मतलब मेरी मतलब ये है कि जैसे बेला ने सजेस्ट किया है, एक कॉमन चीज़ के लिए हम सब वर्क कर सकते हैं। वो है आप सबके लिए एक ही चीज़ है, वो है अभी जो कॉप्स के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप सब में से somebody wants to volunteer जिसको like इसमें पार्ट होना है to teach them a lesson. It's not going to be, using, the bloodshed and stuff like that. It's going to be more complicated than that. So, yeah, just saying. I mean, I'll have to think about some ideas. I mean, I can't say for sure, but if I come up with something, I will, definitely let you guys know. And So we got one volunteer. Okay. Anybody else wants to volunteer? It would be very exciting for us to see if somebody uses something other than bloodshed and do I don't something out mind of the helping. box. Oh, you want to help? You're from? Yep. I'm from LSD. LSD. Oh, wow. Okay. I will also. So, okay, so we got one GSF, LSD, and one I will also. Angel. Okay, so Mayhem. Okay, we have one more option. So who's gonna fill in? Nobody wants to join in? Oh, Gabriel, you missed a little bit. Yeah, Xavier? What did I miss? No, go ahead. What did I miss? So we were saying we had a list of cops, right? So I was giving them an idea. Out of these people who are sitting here, maybe they can come together, do something other than a bloodshed against these cops. One of them, of course, and so we got 4 volunteers. We have one Angel, then one LSD, and one GSF, and one from Mayhem, and we will have one more spot opening. So who wants to join in? Nobody? Scared? Are you guys scared? I mean, when I said no bloodshed, are you guys scared? I thought Mandam was supposed to be the strongest, right? You just raised your hands up for being the strongest group. What happened? Oh, we would like to join. Who? I can't take decisions alone. Your loss. Who is it? You? Yep. Rust. So we have 5 people joining in. Gabriel, Xavier, you want to keep some rules and regulations. I mean, I just said no bloodshed. So I want to really see what they're going to If there be see. any rules and regulation on us, then it will be quite hard to. I mean, you can have a little bit of bloodshed. That is fair. Everything is fair and So war. what we'll do is no bloodshed or full bloodshed. It's just like that. We've heard about concerns, all right. We've heard about the concerns. We've heard about enough the list information. of officers that they are kind of, you can say, against. We will forward the message to the Divine and we'll also ask him as to what needs to be done next, because I am sure that if we leave them in their own hands and if they do what they do best, the officers are going to lose their life, probably have doctors treat them and lose them again. So yes, go ahead, Gabriel, what I was suggesting for them is, it's a task, all right, which we are going to decide fully. So we just needed some volunteers before definitely, we will. Before we go to that, the volunteers are set into place and they will get further instructions on a future date. So if you guys feel you'll have to start immediately, that is not the thing. You all will be contacted about it as well. So we have 5 volunteers, one from GSF, one from LSD, one from Angel, one from Rust, and
I'm Mayhem. not One quite from sure. Mayhem. I'll first ask my boys. Okay, okay. So we have one Fair backing enough. up Alright. already. Four Okay. volunteers. That's all right. Four volunteers who, so first come first serve. So guys, I think Mandem and Rust, whoever wants to join in, you can come up and say what you want to say. All right. See, over here, no one is forced to say anything. You can take your time Exactly, as well. And exactly. All right, so I have a concern, so I'll just voice it out right now. So I'm not backing up, but as I mentioned earlier in the starting, that we are still very low in numbers, and some of our on a, they're out of the city. So I'm not, as I said, I'm not backing up, but I will still have to consult it with my girls if they, if they will be available to do it or not. So Don't worry about the yeah. problems that will arise later. Once we have things in place, once you get recontacted, you guys will know more. So don't overthink it through right now. Got it. right now, we got all the enough information and things we need to be aware of. Now, Mr. Gabriel. Yes, would you mind passing the gift that was given by the Divine Order? Now, I want to talk to you guys, all three of you. I mean, all two of you. We can step outside. Okay. You और भाइयों remember क्या the हाल है? divine? Yeah, we can hear them. We can definitely hear them. Too much. वो यार ब्राउनी की बात हुई थी, मिल रही है क्या? ब्राउनी पॉइंट थी यार तो ब्राउनी नहीं दे रहे भाई। ब्राउनी पॉइंट दे रहे हैं। यार उधर बैठे हो ना, दिख नहीं रहे हो, सच बताओ तो थोड़ा एक बार खड़े हो जाओ तो। क्या अभी देख रहा हूँ राइट में कौन है? Alright, gentlemen and ladies, you will all receive one gift that is given by the Divine Order. And keep this to yourself. And this is a very key part for you to connect with the Divine Order. So, Mr. Gabriel, would you mind please passing on? So we've heard your problem. We've heard one major problem, that is the police officers. And out here, we are giving you a glimpse of hope. Like I said, you feel that taking them down just brings them back. But this time, it might just be a permanent solution. So the small glimpse of hope that I am giving, I want you all to keep it very, very safely with y'all. Because y'all might not know the value of this, but this is going to come of great use to you in the near future. So wherever y'all are, however y'all are, just ensure this stays with you very secretively and very safely. I'll request one by one for y'all to come near this person out here, and I can give it to y'all one by one. And just remember, When I since say y'all one by are... one, each family of one. Yeah. So remember, if y'all are two people from the same family, y'all will still get only one. Y'all won't get two for that. So yeah, one by one, each gang can come forward and collect the glimpse of hope. One second. Yeah, here you go. Yep, here you go. There you go. There you go. Thank you. There you go.
Here you go. I believe each of you have received one of the gift. Angela, you have one with you, right? Can you give it to Bella, please? Thank you. Really appreciate it. Like I said, this thing we passed on to you is a very special thing and definitely come in use for you in future. But this has been provided to us by the diviner itself. So next time we're gonna be meeting up, make sure you're gonna keep that thing safe with you. And not talk about Gabriel, it. Thank you. please take ahead. Yeah. So, alright, guys, I'm just gonna say I appreciate your presence here. We might contact you in the near future. We might not contact you in the near future. There might be places where we could be of help to you, where you could be of help to us. But we will meet for sure on a nearer date. In that time, things might be a little spiced up. But see you until then. You may take your leave. All right. Thanks a lot. Have a good Okay, day. guys. Bye. Angela, can I talk to you for a sec? Yeah, sure. Yeah, I heard you both of three guys go to each family and introduce yourself and introduction. Yes. Yeah. Might be not to come to us. I'll become from mail invitation to show. Yeah. Okay. Okay. I'll let them know. No issues. Okay. Yeah. No issues. Thanks for coming. Okay. Alright. May God bless you. Bye. Do you need something else, mister? I just want to. है क्या जगह चले हम भी है क्या जगह हमारा जैसे फास्ट फास्ट कार है तो धीरे धीरे ही जाएंगे हम हाँ वो तो दिक्कत है नहीं तो लंबा गया टाइम पता नहीं सोल्यूशन आएगा भाई हाँ ठीक है एक चीज़ बात तो हो गया चलो मैं भी यही चीज़ सोच रहा था कि पीडी बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब बच रहा है मेरा छोटी हो रहा है कॉमन प्रॉब्लम तो यही है only yeah I thought it was happening with me only but not that चलो अच्छा चीज़ हुआ कि बात उसके साथ बट वही है कि वही बोला कल कितना आएगा सब तो यही मेन बात है कि भाई पीडी नहीं रहे तो आपस में लड़ो बात वही है कि पीडी नहीं है तो आपस में लड़ो पीडी आएगा तो कोई नहीं लड़ सकते हो पीडी को मार रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट वही बात है ना मार के फायदा कुछ आ रहा है अल्टीमेटली वो फिरारी सिवाय कुछ पीडी क्लॉक एंड पीडी स्टफ सेटिस्फैक्शन कुछ दे ये देखो पीडी वाला का नाम देते हैं पीडी वाला एक ही हो सकता है बच्चे वाला देखो 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 देख दिमाग देख रहे हो मतलब समझ रहे हो ऑफ रोड बाइक है दिमाग देख रहे हो बंदे का देख रहे हैं एक ही हो सकता है ये बच्चे वाला ही है
और कौन सी चलो भाई, अच्छा बच्चा तो फिर ठीक है। मैवरिक्स तो ठीक ही है। देखो बाहर होगा, ऊपर से जा रहा है नीचे कोई। भाई स्पोर्ट्स का लेके इतना आगाज में मसल का लेके इससे कुछ ज़्यादा ही आगाज नहीं करती हमने। बहुत ज्यादा ही आगाज, मैंने उल्टा जगह छोड़ दिया, मतलब साइड में खिसक गया स्पोर्ट्स का। तब भी वो आगे जाके ठुक गया भाई 3 जगह ठुका है मेरे लिए। 3 जगह तो मेरे ठुका। चलो वो तो कोई नहीं, एक जगह तो मेजर ठुका ही ठुका। कौन तो एक जगह ठुके ना। हाँ बहुत लंबा गया भाई, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को सोने जाना है। ठीक है सलमान भाई आ जाएंगे, जयमान ठोकते ठोकते गए हैं। कल कब आएगा ये स्पोर्ट्स का? देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। रेस चल रही गया उसकी रेस चल रही है। और मैंने शो किया इसको। अब थोड़ा पैसा उठा के जाता हूँ। मैं कहाँ ड्रॉप करना है बताओ? अपार्टमेंट निकल जाए। घंटा है रेस में। अभी मैं किसी को तोड़ा है, तेरे पीछे कोई बंदा था। मेरे पीछे कोई बंदा था, इसके पीछे रेस में, उसको तोड़ दिया। भाई क्या नहीं, हमारी प्यार भी चल रही है यार, थोड़ी कराए थोड़ी मेहनत भी करे थोड़ी सी। चढ़ चार कन्वेंशन कोड्स मिले किसी को? कोड्स कौन करता है तुम? बैंक हैक का बंदा एक है, बट आई डोंट थिंक वो हैक ही नहीं। अब कोड्स मिलेगा तो देखते हैं, अगर कोई हैकर मिल जाएगा तो कर लेंगे, तो भेज देंगे। क्यों क्या हुआ? मैं तो पूछ रहा था, मैं भी करता हूँ ना बैंक हैक को, ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ क्या क्या बोल रहे? मैं कह रहा हूँ मैं भी करता हूँ ना बैंक हैक, इसलिए पूछ रहा था। हैक करते हो तुम? हाँ। अच्छा तुम्हारा ये क्या क्लब, क्या क्रू है तुम्हारा या गैंग है? 2 पार्ट में डिवाइड है, एक क्लब, मोटरसाइकिल क्लब और एक फैमिली। तुम कौन से में से हो, फैमिली या क्रू से? फैमिली। यस नो वरीज, वी विल कांटेक्ट। ओके नो मिलते हैं राइटर भाई। puta madre! बदतमीजी कर रहे हो, पिटाई कर बेटा कर क्या हो? वो कौन पुता? ओए क्या कह रहे हो तुम? गाली दे रहे हो? गाली नहीं दे रहे हैं भाई साहब, बोल रहे हो मतलब पुता मादरे गाली होती है भाई साहब। ओह पता नहीं था भाई साहब, पता नहीं था। तो भाई साहब तमीज से बोले करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्या बोल रहे हैं आप भाई? नहीं सर ये वैसे ये टोपी कहाँ से मिली आपको? बहुत सुंदर है। ओए टोपी नहीं है, कस्टमाइज हेलमेट। चेहरा है आपका? कस्टमाइज हेलमेट है। ओह मुझे लगा चेहरा ही है आपका। बदतमीजी कर रहे हो तुम? अरे मैं तो क्यूरोसिटी दिखा रहा था, अपनी क्यूरोसिटी अपने पास रखो, तुम बदतमीजी ना करो। ठीक है अपने पास ही रखते हैं, बांट देंगे क्यूरियोसिटी पूरी आपकी ऐस में। नाम क्या है आपका वैसे? ओ मेरा नाम है गुफी। सब क्या नाम है? गुफी है? गुफी? हाँ। गुफी जी क्या काम करते हैं आप? शायद हम क्या करते हैं अभी बताता हूँ क्या करते हैं।
अब तुम ही हो, अब ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं दिखाऊं? भाई साहब कुछ पैसे मिलेंगे कि? ये करते हैं दिखाऊं? सॉरी। ठीक है भाई साहब। सब गोली को चला रहे हो यार आराम से। भाई साहब मन कर रहा है हमारा, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही यार, पुलिस आ जाएगी, फालतू लफड़े हो जाएंगे इधर ही। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो जगह जहाँ चिल करते हैं हम अच्छे से, शांति रहती है वहाँ पे। अल्लाह पुलिस बच्ची है, पुलिस का काम है। अरे यार यही तो शांति रहती है पूरे शहर में। पूरे शहर का पूरा शहर ही शांत पड़ा है आजकल। कहीं राख है तो कहीं चूहा चूहा। चूहा? हाँ मेरे घर में हो रहे बहुत सारे भाई साहब। एक वो सोच रहा हूँ कहाँ से बुलाऊं पेस्ट कंट्रोल वालों को। भाई साहब तुम लग रहा है कुटाई के काम कर रहे हो, मुझे लग रहा है। अरे गुफी जी मिलना होगा आपसे दोबारा। अरे देखो ये दिया एडमिन में कुछ तो है। उस समय क्या किया है कि मैंने डिस्कॉर्ड इनवाइट चाहिए, मैं आप इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपने। उस समय क्या कराया फिर भाई को? सोच रहा हूँ प्रेसिडेंटशिप ले लेता हूँ मैं भी। मेमशिप करूँगा प्रेसिडेंट में तो। डिस्कॉर्ड इनवाइट से नहीं, डिस्कॉर्ड इनवाइट मतलब जी में उस पर पड़ा है ना, गैंग वाले डिस्कॉर्ड पे इनवाइट आया था ये वाला कि जिससे इंट्रोड्यूस ना करा पाया था तो वो वहाँ पे डाल देता गैंग वालों से। ले लूँगा, इन्फोर्सर की वेस्ट अच्छी लग रही है, सोच रहा हूँ 5 सितारे ले लूँ मैं भी। चलो यार हम करते हैं, बोलते होते काम भी करना है उसको। बाय। चलो जी मिलते हैं फ्यूरी भाई, आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं। ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਨ ਗਲ ਚ ਚੇਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਜੇਬੀ ਚ ਫੇਮ ਉੱਤੇ ਆ ਨੇਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਗੇਮ ਕੀਤੇ ਆ ਫੇਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਡਿਟੇਲ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬਰੋਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕਲੋਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਲੋਲੀ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਗਨ ਰੱਖੀ ਅੱਧੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੀ ਛਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ